Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और यस some breaking news इसीलिए आई वाज एक्चुअली होपिंग कि यार आज रात को मैं आऊंगा लाइव, लेकिन नहीं, आई हैड टू कम ऑन लाइव बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज एंड ऑफ कोर्स बाय द थंबनेल बाय द टाइटल आपने फिगर आउट कर लिया होगा. टुडे इज द टाइम फॉर द चेल्सी शो, बट नॉट जस्ट दैट. यस ऑफ कोर्स, अगर हम चेल्सी की बात करें तो हमारे राइवल्स की बात करनी ही पड़ेगी बिकॉज दैट इज वेयर हम कितने पानी में हैं, कितना पता चलेगा. बहुत सारा खुलासा करेंगे आज. I'm just trying to open it out. Yes, definitely मैं अकेला हूँ आज with you all because I would like to have your views as well, और मेरे views भी देना चाहूँगा. That is what the discussion is. It's more about outbreak, simply speaking. लेकिन talk about outbreak यार, it is basically big news. Biggest news of all definitely is आज imminently, I think probably मेरे ख्याल से कल तक हो जाएगा. Three exits, three major exits. Obviously thumbnail से आपको पता चल गया है. One is Bruce Buck, the chairman of the club, is finally out. हाँ, वो maybe good riddance in time. हाँ, आ गया था time उनका. 20 plus years in Chelsea Football Club, but Marina Granovskaia, yes, she might be out any moment as well as per the reports. And Lukaku तो यार पता ही है, मतलब एक पैर ऑलरेडी बाहर है चेल्सी के बाहर. लेकिन big up to everyone जो भी join किया है. Lou Manu, thanks for joining. Always great to have you as well. Yes, enjoy the great stream and smash the likes because without the likes गाड़ी चलती नहीं आगे. Let's have the likes so that we have more people, have more reactions, because yes, as a Chelsea fan, pretty sure there are mixed feelings. आज बहुत ही mixed feelings हैं and we'll be expressing a lot of them. Farhan in the house, good evening to you as well. Ali Gaming in the house, and of course everyone watching, put in a comment your first reactions about these exits at Chelsea, and अगर आप opposition club में हो तो how do you feel about it? Where do you think Chelsea is heading? Farasat Ali, always good to see you. Finally, the Dutch blonde coming to United. Let's see. What's up, Ankit bhai? What's up, Vijit? Hello, Ankit bhaiya, to Alok as well. भाई अगर चेल्सी रहीम स्टर्लिंग डेम्बेले और स्क्रीनियर फॉर लुकाकू स्वैप और कुंडे या कुलिबाली ले भाई इतने सारे चीज होना जब चीज शुरू भी नहीं हुई है, इट्स काइंड ऑफ विशफुल थिंकिंग. लेकिन आई हियर यू, एब्सोल्युटली आई हियर यू. ब्रिलियंट कमेंट. बट पार्थ, हेलो टू यू एज वेल. हेलो अंकित भाई, मरीना, फहद, एब्सोल्युटली हम बात करेंगे उनके बारे में. एंड डेरेन राउस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग. इफ यू डोंट गेट कुंडे वी शुड गेट बर्मर. वेल लेट्स सी, मतलब अगेन काफी ऑप्शंस है, बट व्हाट इज मोर फीजिबल हम बात करेंगे. नॉट जस्ट अबाउट चेल्सी, ऑफ एवरी टॉप यूरोपियन क्लब. सो स्टे ट्यून्ड. इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग ट्रांसफर शो, बट ऑब्वियसली स्टार्टिंग विद चेल्सी, इसलिए वो मेन आज का टॉपिक है. हेलो टू जेएसके, गौरव. वेल मैं आ रहा हूँ आपके लिए. मैं हो सकता हूँ क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स थे ना. आई एम लाइक मोर लाइक आई हैड टू अपडेट यू ऑल प्लस आई हैड टू रिएक्ट माई सेल्फ. मुझे भी बड़ा निकाला था. लाइक कमिंग आउट एंड ऑफ कोर्स आई वांट योर ओपिनियन. लेट मी सी इफ मिडवे इफ एनी कंटेंट क्रिएटर्स इज कमिंग एंड जॉइनिंग, डेफिनेटली मोर देन वेलकम. वेल लेट्स सी we'll come to that. And by the way, उससे याद आया, everyone who's watching here, यार प्लीज एक रिक्वेस्ट है भाई. Not only the like button, but do not forget to hit that bell notification icon on both our channels, that is Almighty Sports Plus and Almighty Blues FC. उससे मुझे याद आया, ये अभी आज ब्लूज का ज्यादा टॉपिक होने वाला है कंपेयर टू अदर्स. सो लेट्स चेंज द बैकग्राउंड टू ब्लूज बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर इन. So people here, yes, just well in the house. And the reason why I'm saying is bell notification icon, and because बहुत लोग पूछ रहे स्टर्लिंग भाई. मैंने प्रॉपर रिएक्शन दिया था कल, वापस रिलीज किया है क्लिप आज सुबह on Almighty Sports Plus. Please go and check it out. हाँ, for some reason when I'm live everyone watches, supports me. That's brilliant. I love them all. लेकिन यार when I release a video, please यार बहुत मेहनत लगती है वहां पर भी. It is a meaningful, enjoyable video, short video, so do watch it. There is a lot of update and opinion on Sterling as well वहां पर. That's on Almighty Sports Plus, just so you know. But यहाँ पर यहाँ we are having lucky video with us. Okay, nice from Odisha. Yes, absolutely भाई. मतलब again thumbnail से लगा कोई लड़की आ रही है बाहर की. गौरव, come on man. As in I don't mind if Marina comes in. मतलब I would like to interview her कि what went wrong and what went right at Chelsea. हाँ, things aren't formal yet, but we know it's kind of very imminent. But yes, again, this is a comment. Come on, we should have at least 50 likes in the next 5 minutes. ठीक है, 50 लाइक कर दीजिए सब लोग, एक ठोक दीजिए लाइक बटन, मस्त होगा. I'm kind of happy Marina is gone because she had zero ball knowledge, but she was good negotiator. That's the thing. यार आदित्य आएंगे, इस पर भी आएंगे डेफिनेटली. We'll come to that. और hi to Harsh. Now, yes Farasat, we'll come
सबके क्वेश्चंस और कमेंट्स में आएंगे वन बाय वन एज मच एज पॉसिबल. अगर आई मिस इट देन ऑलवेज देयर इज अ वे टू प्रायोरिटाइज माय सुपर चैट्स. बट आई हैव टू से यार, फर्स्ट रिएक्शन क्या है, मतलब ब्रूस बक. यस, द न्यूज फॉर पीपल आउट देयर हु डू नॉट नो, दिस इज एक्चुअली ऑफिशियल. तो मैं शेयर करने वाला हूं. एंड फॉर पीपल हु आर एसोसिएटेड विद चेल्सी एंड विद प्रीमियर लीग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, वो रिलेट करेंगे, क्योंकि ब्रूस बक, ही हैज बीन आर्गुएबली इन 3 phases ऑफ चेल्सी, प्रॉपर रहा है. मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज जस्ट अपॉइंटेड बिफोर Roman Abramovich became the owner, and then he was there throughout. Abhi obviously in Todd Boehly era, technically couple of months, not even a couple of months. Lekin this is what it is. Yes, the big news: Bruce Buck to step down as chairman of Chelsea Football Club. Now, what is the exact news? Chelsea announced that Bruce Buck, who served as chairman since 2003, will be stepping down from his role effective 30th June. He will continue to support the club as a senior advisor for whatever reason, वो पता नहीं क्यों है. लेकिन आपको याद है तो हमने कवर किया था इसी चैनल पे on Almighty Blues FC that Bruce Buck was one of them जो बैक कर रहा था Ricketts family. Remember, there was a lot of controversy regarding Bruce Buck. हाँ, he was the one who was looking for money. बहुत ही kind of laid back attitude है Bruce Buck का. He's not one who's really calling the shots. Aggressive नहीं है in terms of the chairman जो chair रखते हैं. But यहाँ पर, just to continue the news, during Buck's chairmanship, Chelsea solidified its position as one of the world's elite football clubs and a globally recognized brand followed by millions. In that time, the men's team earned 18 major trophies, more than any other English club. I have to kind of put it out there. That's a fact. While Chelsea women won 12 major trophies. 30 major trophies under Bruce Buck. I know he was a chairman, he was not directly related, लेकिन भाई बहुत लोग जो क्रिटिसाइज करने में एक नंबर है ना, पहले ही क्रिटिसाइज कर लेते हैं. I have to tell you, yes, Bruce Buck was an issue. He was an issue lately, but what he has done for Chelsea Football Club over 20 years, वो आप नकार नहीं सकते. He was simply outstanding for this period. Did Chelsea have such a chairman before this? I doubt it. Maybe I'm wrong. Again, Chelsea fans, maybe someone who's been following Chelsea for a long time will be better off letting me know. मुझे लगता है हम keyboard warriors बन जाते हैं काफी बार, including myself. We kind of put comments, put things based on certain reports, based on certain opinions. लेकिन you cannot say that Bruce Buck has done much. I am seeing a lot of hate on Twitter, on every platform possible, कि good riddance. हाँ, in short term it is good riddance, definitely. But in long term, I don't know. Someone who knows the club inside out, इसीलिए he might have been kept as the advisor. I'm just kind of putting it out there, right? So it's very easy to kind of criticize without even knowing the background. We don't know what is happening, in the background. Yes, there was a lot of controversy with regards to Bruce Buck, off the pitch. He was someone जो काफी corruption में involved थे in Chelsea whenever it was, in the news. Lekin you cannot come to conclusion that he has not done anything as well. So hats off to Bruce Buck. But the bigger news is what? Everyone watching, and of course, even the opposition fans would be, really aware of this by now. Lekin the fact is, Marina Granovskaia, who's supposed to be Roman Abramovich's right-hand person, she is not going to be at Chelsea Football Club. हाँ, हमें लग रहा था कुछ हफ्तों से कि that will happen, but I was thinking it'll probably not happen now. It'll probably happen, later in the year, maybe later towards the season. That's what मैं सोच रहा था. It would be a smoother transition. When Todd Boehly took over, what was the first thing as neutrals or as Chelsea fans we expected? I expected the least amount of changes as possible. सच में मैं बोलूँ तो. हाँ, again I'm seeing a lot of opinion on social media that good riddance, it's a new start, positive, we are going to clean up all the dirty stuff. Man, Marina Granovskaia definitely had issues. She was not a footballing person. Maybe in terms of transfers, वो नहीं target कर रही थी जो exact fits है, but उनका job वो नहीं था. उनका job था to basically get the deal over the line, get basically, as in negotiating, which she was very good at. Of course, she was a big influencer. और वो हमें पता है क्यों पता है, क्योंकि again I know that awards in FIFA, in football generally are a farce. लेकिन when it comes to director of a club, you are getting it. आप नहीं बोल सकते that is a farce in my opinion, because that is a rare award in itself. So she actually getting it. Being a lady director at Chelsea Football Club, of course with Roman Abramovich being out of the club. Remember, he was not in London. काफी दिनों तक he was not in London. I think करीबन 1.5 साल. Correct me if I'm wrong.
and that is what I'm saying, that she needs to be definitely been given the, as an, we have to clap for her, because the fact is इतने सारे मुश्किल की घड़ी आई यार चेल्सी के पास. हाँ, we were banned, we had a transfer ban, remember, of course, under, Romelu Lukaku not being here, जैसे मैंने बोला. और more recently, last 6 महीने arguably have been the toughest time Chelsea Football Club के लिए, और she was there. हाँ, it would have been good if she continues, but why am I concluding that she is not going to be there? Because it is kind of obvious now, because it is none other than Fabrizio Romano ने कंफर्म कर दिया है that it is probably going to be imminent. She is going to be leaving Chelsea Football Club. So that is really really not good news for Chelsea fans especially, because हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यार अभी आएगा, चलो बर्ली 2 हफ्ते पहले अनाउंस हुआ है, फाइनली we'll get some transfer over the line, and that is where Marina and Co come in. लेकिन यहाँ पर ब्रूस बक ही नहीं, मरीना भी जा रही है. तो काम कौन करेगा भाई? टुकल और बर्ली बैठकर बात करेंगे क्या क्लब से? Very very interesting. Or they must have already found a replacement, I'm hoping. But I'll take few comments before I go further in the transfer talk. यहाँ पर काफी comment मैंने मिस कर दिए. तो यहाँ गौरव पंडित, चलो कोई नहीं. Good evening to Vivek. Napoli's manager Spalletti said that he will resign if Koulibaly somehow gets sold. नापोली भाई कुछ तो ड्रामा करती है हमेशा ट्रांसफर्स में. Okay, fair enough. City Unplugged, I'll remember that. JSK, absolutely. And of course, generally Pranay as well comes, Dominic Rich comes. We do have people, JSK, but again, we will have more people. Don't worry about that. And let's get up the likes, people. Come on. Hi to Kudnal, Ankit, I'm kind of happy. Okay, ये ले लिए थे हमने. My question, Farasat Ali, आपका question पाएंगे definitely. भाई जर्सी कलेक्शन दिखाओ. भाई अभी थोड़ा सा बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर भी आएंगे definitely. There's a small chance that we might end up signing Dembele and Sterling. Yes, fair enough. But yeah, I think Boehly is just come for business already. Bruce Buck leave, and now Granovskaia, the best director of the world. Well, there are two ways of looking at it, Manas. तो एक तरह से आप देख सकते हो कि यार when it comes to Chelsea Football Club, we are ruthless. In the last 15 years, Roman Abramovich ने दिखाया था. अभी him coming in, maybe he's continuing that thing जो maybe Roman Abramovich ने बोला होगा कि this is what Chelsea needs a change. लेकिन doing it in one window, I'm not agreeing to that. Honestly speaking, I think he needs the backing of the the board. और वो वहाँ पर totally new start करना is not easy to prove in the very first year. हाँ, he's thinking long term. That's a positive part. Like in short term, it will impact the club negatively, in my opinion. Dumfries or Skriniar should be brought in. Either Kunde or Koulibaly, Sterling Leao, and it's a nice transfer window for Chelsea. Let's hope that get one of Kunde or Koulibaly. Okay, fair enough. Then look for another centre back. Well, let's see. We are looking. Chelsea is unfortunately going through a forced rebuild after the sanction thingy. Yeah, or force से भी ज़्यादा, I think अगर हम convince कर सकते for Marina to stay at least till the end of this calendar year, वो अच्छा रहता मेरे ख्याल से. I would say Skriniar, no nonsense defender. Interesting. Is Raphinha worth 70 million? That is the question. Or by the way, yes, of course, हम Chelsea के बारे में बात वापस करेंगे, लेकिन quickly because of certain comments यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगा, because there is a lot of news otherwise as well. और वो क्या है? Let me share the screen itself. Definitely Fabrizio ने बोला है कि it is basically something is happening यहाँ पर. Raphinha situation. Barcelona agreed terms with Raphinha, but no agreement on fee with Leeds. Arsenal are in direct negotiation with Leeds, interested since March. Interest FC. आप बोलते हो most of the English clubs, both Chelsea and Tottenham have been in contact too. Fee could be around 65 to 75 million. अब वो interesting है, वो pounds बोल रहे हैं कि euros बोल रहे हैं भाई, वो that is the problem. If it is euros, then I can understand. Pounds, absolutely no brainer. It's too much. क्या है भाई? ठीक है, रफीना बहुत अच्छा प्लेयर है भाई. आप रफीना 70 million pounds, really? No way. Chelsea is on American way. Hello, Ankit bhaiya, big up. Yes, thank you to join, and big up to Manav as well. Let's get the channel to 4K subs quickly. Yes, हम खाली 20 दूर थे when I started the stream, so hopefully you guys can get us to 4K and beyond. And fun fact, it's English media that has ruined the transfer market, not the oil clubs. Interesting. Todd Boehly was always touted to be the chairman, so Bruce Buck news makes sense. Yeah, exactly. Just Vela, that's true. But again, was he? I personally didn't expect that abhi change करेंगे एक साथ.
back to back to back. So that was not what I was expecting. I was expecting कि slowly and steadily वो होगा by the end of this calendar year, by the next transfer window. That's what मैं सोच रहा था, क्योंकि यार there are so many things which goes on behind the scenes. Already जो काम हुआ है ना last 2-3 महीनों में, जब Todd Boehly was nowhere there, that homework what Chelsea has done in terms of the transfer window, पानी में बिखर गया है बस, जहाँ फ्लो होके दूर चले गया है बस, लिटरली. So I don't see that as a plus point. Yes, at some point we had to press the reset button. But is it now when we are already late in the transfer window? I don't think so. मतलब I know maybe I'm reactionary. Maybe I know that there is a lot of ये loan army हमारी है, youngsters है जो who can help us in the short term. Let's be honest, it would have helped more if जो भी हमने काम किया था, you put it into use and then maybe move on. That is what a proper succession plan is, my opinion. क्योंकि 2 महीने पहले टॉड बॉली को खुद को भी नहीं मालूम था कि वो चेल्सी में आने वाले, right? Let's be honest. And yes, absolutely. Check out this comment. Everyone, like the stream and subscribe to the channel, please. And then, अरे भाई बहुत पीछे हो, चलो. Sterling 45 million, Koulibaly 40 million. Okay, Conan 10 million. Another centre back, maybe Pau Torres will be more realistic. Well, again, I don't think so that ये होगा, because at the end of the day we need एक और अटैकर मेरे ख्याल से, और एक प्रॉपर विंग बैक चाहिए. और हम बात करेंगे हर एक का प्लेयर और हर एक क्लब के बारे में. Marina and Emma Hayes, two of the most powerful women in world football. That is a comment and a half for sure. Why Kunde deal is taking so much time? Well, Kunde का ऐसा है ना कि भाई मतलब Barca coming up with an offer after 700 million will take certain time, I believe. So maybe they are coming with an improved offer. वो एक चीज हो सकती है. लेकिन I believe it's more like Kunde की injury जो थी ना, वो भी एक reason है. तो he and his camp is probably focusing on that, and then he maybe then restructuring ki kya hona chahiye price etc. Sevilla, maybe that is the thing. They might restructure what their expectation are this week. Ankit bhaiya, where would Sterling play, left wing, right wing or striker? Agar aayega to yaar he'll play on left wing or right wing, absolutely. More left inside forward or right inside forward. Batman, hi to you as well. Come on, Chelsea's activity in transfer is as quick as Maguire. Pratham with a pun as always. Nice to see Pratham. Laporte links aa rahi hai. Well, interesting. Yeah, Sadiq bhai called it. This doesn't sound good for Chelsea. Sadiq bhai, इसलिए मैंने emergency stream किया है ये. Trust me, like the fact is, I was hoping that we'll have at least 2-3 signings कर लेंगे और then वो जाएंगे. हाँ, maybe before the end of the transfer window, but at least 2-3 signings. और यार exits. Talk about exits. Lukaku का भी it's not clear. Like we are talking about a handful of million rupees. Sorry, not rupees, obviously dollars or pounds or euros. That is what we're talking about. Is it for real? और वो भी मतलब अच्छे से नहीं कर पाया. Then before that, I don't know. Maybe Boehly has just got pissed off. Is like, नहीं, we need to press the reset button. I need to step in. Tuchel is even a better negotiator. I don't know what he's thinking. Petr Cech maybe might take a different role. There are too many changes. I don't think a club can function in the ideal manner in such a scenario. It is already bonkers at Chelsea last 2-3 महीनों से. ऊपर से ये हो रहा है. I agree with Sadi 100%. Okay. Fair enough. And by the way, यार हम United के बारे में बात करेंगे. हम basically we cover all top 5 leagues. For people who do not come regularly, we cover all top 5 leagues. We cover international football. We cover Indian football as much as possible as well. So please, give us a subscribe अगर आपने नहीं किया है to both our channels. That is where other channel में आपको football और cricket दोनों मिलेंगे. By the way, we are offloading Asensio. How do you see Chelsea going for him? Well, Asensio, देखो हमें क्या चाहिए मंजुनाथ. Asensio का problem क्या है? Asensio is not consistent. Asensio is not a finisher जो आप rely करोगे in maybe 30 games season in the league. Asensio is not a player जो Premier League का experience लाते हैं. So for me, it doesn't fit जो Chelsea को चाहिए अभी. We don't need someone. We don't need, like, let me put it this way. We don't need an upgraded left-footed Hudson-Odoi. You know what I mean? As in definitely promise है दोनों players में, but they are not finished articles yet. We need people in the prime, especially in attack. मेरे ख्याल से someone who is more direct as well than even Asensio. Your midfield getting old, absolutely. Midfield is getting old. लेकिन भाई Kovacic, I think is prime proper. Gallagher is coming back. Mount maybe uses midfield अगर हम change करें formation. And yes, this one. Jonathan Klaus linked with Chelsea thoughts. So Jonathan Klaus मतलब बहुत ही interesting for people who do not know. यहाँ पर हम transfer stories में step in कर दिए. By the way, slowly and steadily we'll move on to every club. ठीक है. So Jonathan Klaus, firstly, Manav, if I'm not wrong, he's a right wing back. ठीक है. He's not a left wing back. ठीक है.
So he's a right wing back. He plays for RC Lens in Ligue 1. For me, I haven't seen him enough, तो मैं comment नहीं करूंगा on his ability, लेकिन promising in terms of his जो है clips देखा है मैंने, जो basically सुना है उसके बारे में, जो पढ़ा है इसके बारे में, positive on the pitch. लेकिन ऑफ द पिच भाई क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी ने ट्वीट देखा था कल जॉनसन क्लॉस का? मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रहा है, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रहा है. डू वी नीड सच बैगेज अगेन इन चेल्सी? एंड स्पेशली वो बैकअप होने वाले, मेरे लिए नहीं, लेकिन आई नो स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स आ रहे हैं जॉनसन क्लॉस के. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट. आई बिलीव 8.5 मिलियन पाउंड का होने वाला है ये, टू कम्पीट विद रीस जेम्स और टू बी बैकअप ऑफ रीस जेम्स. ये है, अभी लग रहा है कि ऑलमोस्ट माइटी, बिकॉज ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू विंग बैक्स जो रिसेंटली हमारे से लिंक हुए, राइट? और थॉमस टुकल लाइक्स हिम ऑब्वियसली, लीगा उन्होंने देखा होगा, आई एम गेसिंग. बट ऑफ द पिच इश्यूज है भाई, क्लियरली ही हैज सम इश्यूज. वो ट्वीट में अगेन गो एंड चेक इट आउट, आप गूगल करो, आपको पता लग जाएगा मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ. 70 million for Raphinha due to Premier League tax and the fact that Leeds stayed up. फिर भी 70 million. I think it's more because काफी clubs को चाहिए Raphinha. That is more also the reason, right? Isn't Madrid defense line looks better on paper than others after Rudiger arrives? I mean, a bit better than City, but just on paper. I think Madrid defense looks very good. Only catch being that Carvajal, could he be fit for 38 games a season or even 30 games a season? That's a big catch मेरे लिए. I read an article today that Barca have withdrawn the offer and Gunners are leading the race for Raphinha. Well, फेब्रिशियो रोमानो दी मैन मैं फॉलो करता हूं, मैं देखा वो भी ट्वीट 2 घंटे पहले जो मैंने शेयर किया. दैट्स व्हाई आई एम काइंड ऑफ हाइलाइटेड दैट. आई एम फीलिंग दैट फेब्रिशियो रोमानो डेफिनेटली इज प्रोबब्ली हैविंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. वो कंफर्म होकर ही बोलते हैं, आई नो दैट एज वेल. सो प्रीटी श्योर ये बारसा आर इंटरेस्टेड, लेकिन द फैक्ट इज आर लीड्स इंटरेस्टेड टू गिव देम, बिकॉज बारसा तो डेफिनेटली 70 मिलियन तो नहीं देने वाली, इसलिए आर्सेनल आ रहे हैं इन द टॉक्स. एब्सोल्युटली. Why Premier League clubs not go for Argentine league players? They are so good. Well, Ayush, पता नहीं यार, मैं तो week in week out देखता नहीं हूँ, to be very honest. I'm not going to claim कि I watch it. आप कहाँ देखते हो मुझे बताइए, मैं try करूँगा follow करने के लिए. लेकिन Argentina league में there might be players who are really good, लेकिन are they having that opposition of that quality, of that intensity, इतना pressure week in week out? I don't agree with that. There is a reason why basically even national team में भी आज के दिन में अर्जेंटीना में बहुत सारे लोग बाहर के लीग से हैं, और वो difference है versus like previous years. There is a fact that the difference in class is a bit too much in my opinion. There are good players, don't get me wrong, लेकिन in terms of the league play overall, the quality it's not as good for sure. I told you Marina is leaving. Welcome to American Owners World. Well, Pratik, well said. That's what I would say, but bad for us. Sorry does come as a shock. Exactly. It is a big shock for me. Certainly, again, Fabricio confirming it almost. It's quite kind of imminent, obviously. There is a report saying that it is because of Bruce Buck leaving. She didn't expect Bruce Buck to leave. Maybe he was like her father figure. Who knows? I'm just kind of putting it out there as a devil's advocate. Inter Milan say Joaquin Correa. Correa is good, direct hair, but is he that finisher that we need again? I need a better goal scorer, unfortunately, Ayush. Hello to Tanmay as well. And Tanmay, do let us know what do you think about the imminent exits जो दिख रहे हैं आपको thumbnail में. And of course, we'll be talking about other clubs now. Why not Pau Torres? Why not? Biggest question. Why not? ऐसा क्या है ब्रेमर में? I know Bremer is good. No two ways about it. The defender of the year in Serie A. लेकिन भाई Pau Torres is a left-footed player. आपको basically Champions League मैच में दिखा है, आपको सुपर कप में दिखा था. So why not Pau Torres? Why Jules Koundé? Why Bremer? I have no idea. Even Skriniar हम तैयार है. By the way, Inter Milan, meanwhile, मेरे ख्याल से उनके जो डायरेक्टर है और सीईओ है, उन्होंने कंफर्म किया है कि इंटर मिलान को बेचना ही पड़ेगा स्क्रीनियर को, और एटलीस्ट वन ऑफ दो सेंटर बैक्स. तो लुक्स लाइक जैसे, इसलिए मैंने पोल डाला है, स्क्रीनियर, डिफ्राई और बास्टोनी अभी भी टॉटनम ट्राई कर रही है. बाय द वे, स्क्रीनियर लिंक टू अस एंड पीएसजी, ठीक है, और डिफ्राई ऑलमोस्ट बीन ऑफर्ड टू अस. लेकिन मुझे आज के दिन में मैं तो चाहता हूँ डेंजल डमफ्रीज. और मैं क्यों बोल रहा हूँ डेंजल डमफ्रीज? वो डुएबल है. बाय द वे, बिग अप टू श्रेय एज वेल. नाइस टू सी यू. और श्रेय, लेट मी नो योर कमेंट्स एज वेल. क्या लगता है आपको जो हम कवर कर रहे हैं आज टॉपिक? लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना इंटर मिलान के बारे में? इंटर मिलान का एक बड़ा न्यूज है कि दैट इज दे हैव एक्चुअली ऑलमोस्ट साइंड, मैं तो बोलता हूँ
In fact, there is the next AC Milan player, if I'm not wrong, right? He has been signed by Inter Milan, and that is a right back. Yes, it is a right back, or they are basically. I'll tell you who the name is. I'm just looking for the name, who that person is, but I don't remember the name in the back of my mind. But certainly there is a right back who is basically imminently signing for Inter Milan. अब वो इंटर में आ रहे हैं, so it's kind of obvious that अब वो दारमिया है, तो I don't know if they are getting rid of दारमिया भी है और एक और यंग राइट बैक आ रहे हैं. तो if they have to, why do they need Denzel Dumfries? Maybe Darmian, you would say that Perisic जा रहे तो he'll play more on the left hand side possibly. लेकिन my opinion, Denzel Dumfries is available for the right price. In my opinion, they might get tempted because एक right back आ रहे हैं. Also, Inter Milan, they are doing some madness भाई. मतलब I know not for the world football level, लेकिन यार at least in Serie A, लुकाकू हम बात कर ही चुके हैं, होने वाला है कुछ ही घंटों में. लुक्स लाइक इट. लेट्स सी हु कम्स दिस साइड. अगर कोई आता भी है, मोस्टली हो भी सकता है कोई नहीं है, लेकिन एनरिक Mkhitaryan, yes, Mkhitaryan is going from Roma to Inter. Looks like it, and they have already scheduled medical tests, I believe. शायद आज हो जाएगा, from what I know. Onana, of course, their goalkeeper is basically moved on a free. That has already happened. Dybala, that is going to be imminent. वो लग रहा है कि improved offer हो जाएगा और Dybala will also be done. तो Inter Milan, in a strange sense, Inter Milan are probably doing a madness in Serie A. और Serie A में भाई AC Milan क्या कर रही है? रेनाटो सैंचेज, हमें लग रहा था कि रेनाटो सैंचेज will probably be going to AC Milan, लेकिन अभी लग नहीं रहा है रेनाटो सैंचेज का कुछ भी आया है. Nothing else, कुछ भी नहीं है, literally कुछ भी नहीं है. तो रेनाटो सैंचेज looks like he might go to PSG. Yes. In all this, चेल्सी तो भाई मूव भी नहीं कर रही. वी आर मूविंग फॉर पीपल गोइंग आउट ऑफ अवर क्लब पहले, ठीक है. और यहाँ पर देखो रेनाटो सैंचेज मूविंग फ्रॉम ऑब्वियसली लीग टू PSG, a Liga club, which is quite possible compared to basically him moving to AC Milan. और वो क्यों होने वाला है? बिकॉज गैल्टियर जो है, आई थिंक जो फेवरेट है फॉर PSG to become the next manager, is basically favoring a Renato Sanchez. तो वो लगता है it's imminent and AC Milan might lose out वहां पर. लेकिन again, talk about Inter Milan and Inter Milan players quickly. Christian Eriksen. हाँ, आप बोलोगे why is Chelsea kind of club not going for Christian Eriksen, even a Frankie de Jong? Manchester United are going for both those players. फ्रैंकी de Jong के लिए तो डेफिनेटली एक इंप्रूव्ड ऑफर जा रहा है. दैट्स व्हाट फैब्रिशियो रोमानो ने ट्वीट किया क्लियरली. तो आई थिंक 80-85 मिलियन से भी ज्यादा जाने वाला है ये डील. ऑब्वियसली लुक्स लाइक बाय हुक और बाय क्रुक कर लेंगे यूनाइटेड, ठीक है. दैट्स व्हाट मुझे लग रहा है. लेकिन अगर नहीं होता है तो एरिक्सन, इज ही अ पॉसिबल ऑप्शन? यस, एरिक्सन हैज सेड दैट बेसिकली उनकी जो कैंप है, they will make a decision on his future club soon. Manchester United have confirmed their interest with his agent, while Brentford are still in the race. Tottenham are now focused on right back, centre back, and then striker after 3 signings completed. So हो सकता है Eriksen might go to United and not Tottenham. If in case United don't get a De Jong, I think दोनों तो शायद ही आएंगे. I don't see De Jong और वो दोनों आने वाले. This is more like a backup plan, absolutely. लेकिन हाँ, there is a lot of other news as well when it comes to midfielders. What about Bernardo Silva? People, Barca fans, बोलिए. Bernardo Silva, do you see this deal as maybe the change जो लाएगा Barcelona back to the glory days? Again, doability थोड़ा कम है. I know that Man City, I think एक friendly खेलने वाली है, और Pep Guardiola joked that he'll just sign multiple players like him. So I think I don't know. I don't think Bernardo will go. उन्होंने बोला है. As of today, I think Bernardo will continue at Man City next season. But as I always said, I don't like to keep players that are unhappy. So he's not giving anything away. तो हो सकता है for the right offer, they might just let Bernardo Silva go after 700 million. Maybe Barca करेगी bid, big bid. Let's see. Almost every Chelsea defender is connected with La Liga. Unfortunately. Oh yes, membership is open for the channel people. और हमने पोस्ट भी किया था Instagram में भी इसके बारे में. There are membership badges available. Anyone who wants to become a member, please feel free to join as a member. Again, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डेरेन है, यहाँ पर मानव थे. Those are all members already. Of course, big up to Shrey Patil as well. Barcelona should not go for Koundé because Araujo and Koundé are same type of personalities. Okay, interesting. Well, Marcelo fit hoga as left wing back. Marcelo wouldn't be a bad stopgap option. और हो सकता है कि यार we might get rid of Emerson. हाँ, with lot of incoming जो हम देख रहे हैं ना,
there are actually clubs interested in Emerson. तो हो सकता है we might still go for someone else. Or yes, big up to another member, and that is our coach, Mikhail. Mikhail is in the house. Big up to Mikhail as well. How are you, bro? And let me know what you feel about Marina and Bruce Buck going. Buck off finally ho gaya. What about Boo, the Frankfurt striker? Why no club going for him? Well, again, German strikers, strikers playing in the Bundesliga, Timo Werner और आगे बोलने की जरूरत नहीं है. Not just like that. Like in fact, is थोड़ा सा hesitancy होता है यार. Let's be honest. Shreya said Marina news has really surprised me by really big 2-3 days. It's been in terms of news. Well, टोटल रीसेट बटन हो गया और टाइम लगेगा चेल्सी को. चेल्सी फैंस बी रेडी, डोंट एक्सपेक्ट मच एंड दैट्स अ रियलिटी. हार्ड ट्रूथ वही है. Is there any player who can play both left wing back and right wing back? Serginho Dest can play that. He can play that very well. Darmian can play that pretty decently, but again, are those the quality of players that Chelsea needs? I don't think so. That is the main problem यहाँ पर. इसलिए बैकअप में लाना इजी नहीं है. Hi to Mark. Mark, if I remember right, आप लिवरपूल फैन हो और लिवरपूल न्यूज भी थोड़ा सा कवर कर लेते क्विकली. टॉकिंग अबाउट चेल्सीज राइवल्स, Calvin Ramsey, and talking about right back. He has been signed from Aberdeen. Youngster है, brilliant timing भाई. अभी डार्विन नूनेज लाए हैं, कैल्विन रामसे लाए हैं, एरन फैबियो करवालियो. बेसिकली ये जो तीन है ना, तीनों ही यंग हैं. हाँ, दो तो काफी यंग है और एक will be entering his prime in a couple of years time. These are people जो ऐसा टाइम में लाए हैं when Liverpool know that there is someone to basically lead that position, right? और प्रॉपर मेंटरशिप मिल सकती है, प्रेशर कम रहेगा. दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न एज चेल्सी. कम ऑन, हम यहाँ पर लोगों को निकाल रहे हैं who are making decisions, who have done the homework for 2-3 महीनों के लिए और प्रॉपर रीसेट बटन दबा रहे हैं. कब? एंड ऑफ जून ऑलमोस्ट, एंड बाय द टाइम वी साइन फाइनली इट बिकम एंड ऑफ जुलाई. It is late again for pre-season. I don't agree with that fact, and that is why Liverpool, kudos. I have to basically say that is how the club should be run. Hopefully, Boehly is trying that in the long run. He's okay to sacrifice this season in terms of the top 2 finish. That is what I'm assuming. But again, एक होता है ना, आप कचरा बाहर निकालो, लेकिन कचरा है क्या? ब्रूस बक मेरा वही है. हाँ, थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था, लेकिन आई डोंट थिंक वो कचरा है. और प्लस आप पूरी तरह निकाल भी नहीं रहे हो, तो थोड़ा सा इश्यू है. यू शुड हैव प्रॉब्ली टॉक देम ओवर फॉर at least 2 more months. 2 महीने और भाई, simple. But anyway, coming back to Liverpool, Ramsey, promising right back here. Joe Gomez is there. I don't know if he's going out. Trent is obviously there. You can have Milner playing there. तो काफी सारे options हैं उनके. Plus the fact that big news for Liverpool. The big news is Gini Wijnaldum, one of the players that I actually was scouting myself from before the Newcastle days. Yes, when he used to play, young Dutchman जो होता था. From then on, he is going to come back to Liverpool most probably. There are high chances. 1 साल के लिए loan option दिख रहा है Liverpool के लिए, because nothing has worked out for him at PSG. हाँ, it depends on who the new manager is, maybe Galtier or जो भी है. I don't know if they'll play Wijnaldum, or again Wijnaldum को chance मिलता है coming back to Liverpool, his club. I know his exit wasn't very cordial with the fans, लेकिन at the same time भाई, funnier things have happened. ठीक है, Fabregas has played for Chelsea. If you remember, जो बोला था Fabregas ने आर्सेनल के साथ, things happen. Gallas said that I'll score an own goal for Chelsea when the player he was at the time. So you never know, things can change. 1 साल का loan perfect, because the bigger story for Liverpool fans is they are having a long-term project, Jude Bellingham to Liverpool in 2023. भाई साहब, डोमिनेशन होने वाली फुटबॉल की by Man City and Liverpool proper, in my opinion, अगर वो होता है तो I think Wijnaldum to Liverpool, it will be a great transfer for 1 year loan, because he can play multiple positions for midfield में. तो Liverpool fans, मैं तो envious हूँ. Klaus is the right wing back. FIFA में तो उसकी position वही है, हाँ, right wing back है, exactly. But nevertheless, is he so good? To kind of आप baggage भी लाओ साथ में, उसके साथ basically आप try भी करो totally from the French league. French league के defenders, again, I don't want to kind of give examples, लेकिन the fact is Djilabodji और Malangsar याद आते हैं मुझे, simply put. Chelsea should also need to go for David Raum as well. Man United approaching him. Yes, Man United ka is not just Frankie and Christian Eriksen, but also they are going very hard on Raum or I think Anthony. So these are, I think, or of course Lisandro Martinez. I heard Lisandro Martinez is also one of them. यार ये क्या है, मतलब आई अंडरस्टैंड भाई कि आप टेन हाग आप लाए हो एक डच मैनेजर यूनाइटेड में, ठीक है, आई टोटली गेट दैट, एब्सोल्युटली आई गेट दैट. But
भाई इतना लेजी जर्नलिज्म. Basically, Eric Ten Hag doesn't know anyone else or cannot work with anyone else in the whole world apart from Dutch players. क्या इतना lazy journalism करते हैं भाई? I don't know what. Even Christian Eriksen का भी Ajax connection है, just so you know. I don't buy that. ठीक है, लेकिन David Raum, I kind of get it. David Raum, I get it. Manav, thanks for bringing it up. मुझे लगता है David Raum can be a good one. लेकिन वही है, who is going to go out then? लेफ्ट बैक, do you think टेलिस और शॉ और दोनों ही शायद बाहर जाएंगे? आई डाउट इट. टेलिस इज काइंड ऑफ अ रीसेंट साइनिंग. मेरे ख्याल से शॉ का बैड ईयर रहा है, तो आई थिंक टेनांग ट्राई करना है, क्योंकि शॉ इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द ड्रेसिंग रूम. मुझे लगता है शॉ माइट जस्ट स्टे. तो डेविड राउम मुझे नहीं लगता जाने वाले मैन यूनाइटेड फॉर दैट रीजन. दे माइट गेट अ लेफ्ट फुटेड सेंटर हाफ जो लेफ्ट बैक भी खेल सके एज एन इमरजेंसी लेफ्ट बैक. दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी. Reminds me of Daily Blind, लेकिन नहीं, वो नहीं जाने वाले, pretty sure. If Raphinha is 70 million, then Frankie should be 120. Ankit bro, just give me James. We really need him. Carval no one play week in week out. अरे James B will not play if he's just played for 15-20 matches. Trust me on that. ठीक है, James is that age जो उसको हर एक हफ्ता चाहिए फुटबॉल, almost every हफ्ता चाहिए. I don't think Madrid will be able to give him. और वो नहीं जाने वाला. Let's be honest. Like I said, Haaland इवेंचुअली जाएगा मुझे लगता है मैड्रिड या वन ऑफ दोस बिगर क्लब्स. नो डिसरेस्पेक्ट टू मैनचेस्टर सिटी, व्हेन आई से बिगर आई मीन बिगर इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, यू नो व्हाट आई मीन. लेकिन आई थिंक जेम्स आल्सो इज हैविंग दैट. आई नो चेल्सी फैंस वोंट लाइक मी सेइंग इट, लेकिन इवेंचुअली एट सम पॉइंट ही विल गो. काफी लोग बोल रहे हैं ही शुड बी द कैप्टन ऑफ चेल्सी एंड ऑल दैट. आई डिसएग्री. ही इज नॉट दैट वॉइस. ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच. But I can see the kind of quality he has. He really goes to that level. And can I see Chelsea go to that level rather as a club? Of course I can. लेकिन वो big if है. अगर नहीं होता है with Boehly era in next 2 years, I think James might move on in maybe the 4th year. Just putting out. लेकिन next 2-3 सालों के लिए तो definitely James आएंगे. Guarantee you. Let's put it that way. Pitch was so that it suits our attackers. Akhil, unfortunately ये इतना easy नहीं है भाई जितना हमें लगता है. Pitch was is like very difficult. I think the formation is something that Tuchel needs to play around with a little bit. और इसलिए ना प्री सीजन में जल्दी चाहिए था players यार. We needed signings, at least 1-2 signings ला दो. I don't know. I'm really kind of pissed off with so many changes at the same time. But anyway, trust in Tuchel as I say. Hi Ankit, how have you been? Ishan, I have been good. What are your thoughts on Lazio interested in Loftus-Cheek? This reminds me. What about Milinkovic-Savic to Chelsea? Milinkovic-Savic to Chelsea. Again, I know certain tier 1 journalists also have said कि नहीं वो हर season आता है ये story, ये नहीं होने वाला. और the fact कि Chelsea kind of जो formation खेलती है, Milinkovic-Savic might not be the right fit anyway. But in Lazio being interested in Loftus-Cheek, is there some reality? There might be a possibility. Yes, Ishan has a point. Absolutely, there might be a possibility. Having said that, I still believe that we need a proper core DM. क्योंकि हमारे पास नहीं तो players है. ऐसा नहीं कि हमारी midfield बुरी है. Remember, Gallagher is there. Gallagher has played number 6 as well. हाँ, it's not his ideal position, लेकिन खेला है उसने. Mount can also play there. Kovacic can play there. Kante, Jorginho, इतने सारे players है. और एक साथ सब नहीं जाने वाले. तो I think there will be a possibility that we'll have too many midfielders और फिर we'll kind of get rid of them. Because remember even Ross Barkley is there. तो अभी हमें outgoings देख रहे हैं हम. लेकिन looks like we'll need a DM. और वहाँ पर Declan Rice again the only big name that we are linked with really, apart from maybe a couple more. लेकिन हाँ, अगर नहीं लाते हैं then we might just put our money in the attackers. I don't see Milinkovic-Savic अगर direct swap हो और with just a little bit of money then okay. नहीं तो मुझे नहीं लगता. I know very good player, but the fact is it's a new league plus वो core DM hardcore DM नहीं है. So I would say he's more like again somewhere between a 6 and 8, which is something that already हमारे पास है 2-3 player जो मैंने नाम दिया already. Okay, Ankit bhai, Chelsea could defend midfield or attack who can score 60-70 goals and defense which concedes less than 30 or 40 goals in Premiership, and a midfield who controls the game. Chelsea need all of it. Ali Gaving, you hit the nail on the head. I wish it was basically doable in basically a couple of weeks. Possible नहीं लग रहा मुझे, लेकिन we have to make the best out of what we have. ठीक है, हमारे पास बहुत है assets, we have to use it in the best possible manner. और यहाँ पर कुछ और stories मैं cover करने वाला हूँ. यहाँ पर देखते हैं कितने likes किए आप लोग भाई. I hope people you've got us to 150 likes by now. 150 likes हो गए, देखते हैं मतलब I'm hoping. And do not forget to subscribe because like I said, we are very close to 4K.
कम ऑन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स सब्सक्राइब टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, और अगर आप शेयर भी कर सकते हो तो ब्रिलियंट है, डजंट टेक अ बक, यू नो, लेट्स डू दैट. एंड यस, गेट इन योर कमेंट्स, मैं लेने वाला हूँ as much as possible, and you can always प्रायोरिटाइज योर कमेंट्स. अगर मैं मिस करूं, इफ यू वांट प्रायोरिटाइज, दैट इज बाय सुपर चैट्स, अगर आप अफोर्ड कर सको. नहीं तो देयर इज अ मेंबरशिप आल्सो जो हमने शुरू किया, सो डू चेक दैट आउट. मैंने काफी अफोर्डेबल रखा है फॉर पर्टिकुलर रीजन, ठीक है. और हम करने वाले बहुत काफी सारे पर्क्स भी ऐड करने वाले इन द फ्यूचर. अभी के लिए आई एम मोर देन ओपन टू फीडबैक. और स्टोरीज क्या है, तो लिवरपूल वाइनाल्डम हो गया, कैल्विन रैमसे हो गया, डी मरिया आई थिंक टू यूवेंटस. आज या कल में डेडलाइन है. डी मरियाज कैंप हैज टू डिसाइड कि वेदर दे आर ओके विद द यूवेंटस डील और नॉट, जो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफर है. नहीं तो डी मरिया टू बार्सिलोना वापस से शुरू हो जाएगा. ऑब्वियसली एक डोमिनो है. आप देखे थे बेसिकली, इफ चेल्सी को स्टर्लिंग मिलता है, अभी स्टर्लिंग के लिए जैसे मैंने कवर किया ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस के वीडियो में, we have, I think we had bid around, not bid, but we had inquired for about 25 million plus add-ons. तो इतना कम में तो नहीं आने वाला. Potentially 50 plus million euros लगेगा स्टर्लिंग के लिए, maybe closer to 60 million भी. Despite him finishing his contract in 1 year, I still believe that maybe थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स है, लेकिन we might go for it. अगर वो जाते हैं, ठीक है, देन सिटी में एक जगह बनती है अल्वारेज, जिनके लिए बहुत ही ज्यादा लोन का इंटरेस्ट आया बहुत क्लब से. तो सिटी आर नॉट गिविंग हिम अवे बिकॉज दे वांट टू गेट रिड ऑफ नॉट ओनली स्टर्लिंग बट आल्सो जेसूस. सो जेसूस और स्टर्लिंग जाने वाले. जेसूस मोस्ट प्रोबब्ली लग रहा है अभी एज थिंग्स स्टैंड ही माइट गो टू आर्सेनल. यस, स्कमाका नहीं जाने वाले, मुझे लगता है जेसूस जाने वाले वहां पर. दे आर वेटिंग फॉर अ बेटर बिड इफ आई रिमेंबर राइट. And then from then on, what will happen? Meanwhile, I don't think Raphinha will move from AC Milan, but I think Dembele from Barcelona might go to either Chelsea or PSG. वहां पर एक वेकेंट स्पॉट हो जाएगा विद ट्रायोरे ऑलरेडी नॉट बीइंग बॉट. तो डेफिनेटली बार्सा को चाहिए एक अटैकर, और मुझे लग रहा है डी मरिया टू बार्सा लुक्स वेरी लाइकली नाउ. मुझे नहीं लगता यूवेंटस जाने वाले, बिकॉज यूवेंटस के पास already players are coming back from injury and all that. So I don't think it's like, you know, more than Barca required. Okay, why? But Pau Torres feels like another Victor Lindelof. अरे शाश्वत, I disagree यार. मतलब एक तो Pau Torres, if I'm not wrong, is slightly taller, ठीक है. Secondly, he's a left footer. तो एक वेरिएशन देता है. Definitely 3 at the back और 2 at the back दोनों में खेल सकता है better in my opinion. He is a better goal scorer as a defender as well. He is a leader. He's more like a leadership element लाता है. And plus, he has probably started more bigger games in the Champions League than even a Victor Lindelof. So I think it ticks most boxes. I know एक ideal defender नहीं है, but still, who's ideal in today's day? बहुत ही कम है यार, एकदम best defenders available. Okay, thoughts, Ankit bhai, new director of football. By the way, I believe it's going to be Boehly himself. Boehly himself will carry, well, as per reports, Boehly or Atletico Madrid के director is what we were targeting. Correct me if I'm wrong, but for the time being, it will be Boehly and Tuchel as per reports. Agar Marina, again as per reports, leaves imminently. If Dumfries moves, it will be to United. Ten Hag wants him. Yeah, Ten Hag wants everyone. United wants everyone. Media wants all the Dutch players to go to United. तो जैसे Wolves has become a Portugal team, United Dutch team नहीं हो सकती भाई, इतना easy नहीं है. Because Ajax are champions of Eredivisie, or they are playing in the Champions League. I don't think आपको भूल सकते हो. और people, what do you think? What do you think? I know, Nicola, I'll come to your comment as well, bigger brother. But what do you think? What do you all think about Timber staying at Ajax? अब I know मैंने react किया था briefly in watch along yesterday, but Timber staying at Ajax, especially Louis Van Gaal ने बोला है. I know United fans are काफी pissed off with Louis Van Gaal, but I think the guy ना, जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, काफी बार वी गो बाय द थर्ड पार्टी. यहाँ पर कौन था? एक रिपोर्टर था, tier 1 जर्नलिस्ट, who was actually given an interview. तो he very conveniently changed his own words. ठीक है, I am a big follower of Louis Van Gaal. I kind of sense what he would have told. हाँ, he comes across as थोड़ा harsh, थोड़ा brash at times, but the fact is, पहले बोला था कि अगर वो week in week out नहीं खेलेंगे, right, then it will be a problem for him to be in the Dutch squad for the World Cup. And then उसी स्टेटमेंट को रिपोर्टर ने चेंज कर दिया कि नहीं, इफ ही इज गोइंग टू यूनाइटेड देन उसको मौका नहीं मिलेगा. भाई दो अलग चीज है, यू कैन नॉट मिक्स द बोथ द थिंग्स, यू नो, एब्सोल्युटली. लेकिन यहाँ पर आई थिंक वी हैव अ न्यू मेंबर इन द हाउस, एंड दैट्स फुटबॉल विद कमेंट. चलो यार, थैंक्स.
आने के लिए as a member, joining the Almighty Blues family, of course, be it Almighty fan, Almighty scout, Almighty coach, or even the Almighty. But football with Comet, big up. बिग शाउट आउट भी, आई थिंक इनका चैनल भी है, नया चैनल है, बट मैंने देखा है काफी अच्छा कंटेंट है. सो पीपल प्लीज, let's grow our Indian community or even football community generally further. Like I say, it's a fan channel for all to see, and that includes football with Comet, like everyone. So big up, bhai. I hope to have you sometime as well in the future. Let's see. But again, coming back to super chat जो मैंने मिस किया था CFC Blues के द्वारा. Thank you CFC Blues. Rudiger left because of Marina. Good, she is gone. Arey, you can argue that. It's a valid statement. मैं इससे काइंड ऑफ नकारा नहीं चाह रहा, लेकिन सीएफसी ब्लूज आई वुड जस्ट से, देखो मतलब इट्स इजी फॉर अस फैंस टू काइंड ऑफ सी अ फ्यू रिपोर्ट्स एंड गो मेक जजमेंट एंड गो विद दैट. आई डोंट नो यार. आई नो मरीना एट सम पॉइंट वाज द पर्सन जो इनिशिएट करना था उन्हें टॉक्स, और उन्हें डिले कर दिया था सेकंड टाइम जो टॉक्स हुए थे, राइट. बट who knows that among जो एक होता है ना बोर्ड का डिसीजन साथ में लेते हैं, आई बिलीव maybe Marina was for giving a better contract. Who knows the reality of it? Maybe, and maybe जो ज्यादा वोट्स जा रहे थे, they were like नहीं यार, we cannot give him such, क्योंकि parity शो हो जाएगा. So again, I'm like the devil's advocate. मैंने बोला यार, हाँ, there were issues. काफी सारे ट्रांसफर्स वर क्वेश्चन मार्क्स. वी नो इट इन द लास्ट 2-3 years, स्पेशली कॉन्टे का 2018 सीजन से ट्रांसफर्स इतने अच्छे नहीं हो रहे. लेकिन एट द सेम टाइम वी वन द चैंपियंस लीग अंडर मरीना. रिमेंबर दैट. तो वो हम भूल नहीं सकते. और चैंपियंस लीग में कौन मारा यार वो गोल? Kai Havertz और Rudiger had helped us in Kai Havertz signing as well, by the way. और Marina obviously वहां पे help की थी. You can say that, right? तो थोड़ा सा मिक्स है, but I agree that is buck off हो गया. Exactly. भाई टिम्बर का तो मैंने वही बता दिया. तो I think most probably he's going to stay. I don't think he's going to move to Man United because of Louis Van Gaal, but it'll be interesting. आप लोग क्या सोचते हो उसके बारे में? Absolutely. What's your thoughts on La Liga next season? Will Betis finish above Sevilla, and who will be second, Barca or Atletico Madrid? Okay. So Anup, firstly, thanks आने के लिए and thanks for the question. I firstly believe that Real Madrid are, unfortunately for Barca fans, going to dominate La Liga next season. Maybe I'm proven wrong. For Barca fans, for their sake, maybe I'm proven wrong. It's good for them. But मुझे लगता है as things stand, because उन्होंने जो किया है ट्रांसफर्स प्लस कॉन्फिडेंस लेवल आता है, प्लस बेसिकली बेंजेमा is still in his prime. As things stand, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर लेवेंडोव्स्की आ जाते हैं बार्सा इमीडिएटली, जो लग रहा है, अगर डेम्बेले स्टिक्स ऑन टू बार्सिलोना, ठीक है, अगर दे आर एबल टू गेट, आई नो लॉट ऑफ इफ्स एंड अगर मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कुंडे या कुलीबाली, आर्ग्यूबली कुलीबाली अगर आ जाते हैं बार्सिलोना, आई थिंक नेक्स्ट सीजन में दे कैन कम्पीट इवन फॉर द ला लीगा टाइटल. यू हर्ड इट हियर. डेफिनेटली टॉप टू वही होने वाले, ठीक है. एटलेटिको मैड्रिड मुझे नहीं लग रहा है कि दे आर गोइंग टू इंप्रूव टू फोल्ड वापस, लेकिन थर्ड एटलेटिको मैड्रिड आने वाले मेरे ख्याल से. व्हाई? आई टेल यू व्हाई. हाँ, रियल बेटिस, रियल सोसिएडाड, यू कैन से दैट दे हैव बीन रियली डूइंग गुड. विलारियल आल्सो, मतलब दे हैव फॉर्म्ड अ टीम प्रॉपर. आपने देखा चैंपियंस लीग में, दे शुड डू बेटर अगर गुड इवनिंग वहां रहे. लेकिन सेविया इज अ प्रॉब्लम. सेविया प्रॉब्लम क्यों है? सेंटर हाफ, भाई दोनों ही सेंटर हाफ एक विंडो में आप दे रहे हो. दैट इज काइंड ऑफ एन इश्यू. कितने भी पैसे में दे रहे हो, दैट इज एन इश्यू फॉर मी. तो सेविया माइट जस्ट गो डाउन, आई फील. Premier League top 4 predictions is too early, Omkar, so we'll come back to this. But हाँ, अभी के लिए मुझे लग रहा है Chelsea 4th, Spurs 3rd, Liverpool 2nd or 1st City, but it's too early. Liverpool might look out for Pulisic. That I don't see much. ज़्यादा नहीं है मीट उस स्टोरी में. In that sense, I can see that why basically Pulisic wanting first team football, I can see, but I cannot see कि यार why Liverpool, क्योंकि यार left wing back में और other left wing और left forward में is the best position for Pulisic. वहां पर he thrives more, और वहां पर they have a Luis Diaz. He won't get so many games there, pretty sure, as a starter at least. Then what else? I did see Super Topic to clear, if I'm not wrong. Ankit bhai, please bring Minerals FC Johnny on your channel. Okay, fair enough. We'll try and bring, of course. But Super Topic, like I always say, it's a fan channel for all to see. Every content creator is more than welcome, and I am in touch with many of them. Lekin we'll definitely keep it going for sure. Who can break number 9 curse of Chelsea? मैं बोल दूं एक चीज, स्पोर्ट्स अपडेट्स. Get Didier Drogba as part of the backroom staff. How is that? Get Didier Drogba. भाई जो भी है भाई, आपका जॉब वही है कि स्ट्राइकर के साथ मेंटली टॉक्स करो बस, वीक इन वीक आउट. That is enough for me. That is inspirational enough.
That is what I would say. That's the solution. But yes, Rahul is just reminding everyone, keep the membership coming. Shout out. Okay, shout out. मतलब shoot out. Shout out for football with Comet. What is the situation Dembele? मैंने बात कर ली है कि यार it's a waiting game going on right now. I think fact कि 700 million मिला है ना just Barca को, so they are maybe taking some time to see if they can give a better offer to Dembele, and Dembele's camp is also probably waiting for PSG's offer. I'm guessing. हाँ, Chelsea का situation थोड़ा सा चेंज इसलिए हो गया होगा बिकॉज अभी फोकस चले गया, लुकाकू को बाहर निकालो, ब्रूसबर्ग बाहर चले गए हैं और मरीना दीदी को भी बाहर निकालो, तो अभी एग्जिट्स का देख रहे चेल्सी फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड. डेफिनेटली कुंडे सिचुएशन इज आल्सो काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग वहां पर, तो डेम्बेले और कुंडे सिचुएशन में थोड़ा हो गया इन टर्म्स ऑफ एक डेडलॉक सिचुएशन हो गया ऑलमोस्ट, बट होपफुली इट विल चेंज. मे बी स्टार्ट बारसा करेगी, मुझे लग रहा है दे माइट जस्ट कम विद अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट, आई हैव अ फीलिंग, बट दे मे नॉट increase as much as what he wants. हाँ, उन्होंने बोला है, अगेन पीपल शाउट आउट फॉर माय वीडियो यार, यहाँ पर मैंने एक वीडियो किया था, वहां पर डिटेल में मैंने बात की डेम्बेले के बारे में, सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट. दैट इज ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस. आज सुबह ही मैंने रिलीज किया, तो उसमें मैंने एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट भी दिया है और मुझे काइंड ऑफ predicted what will happen. I agree with this. Okay, we need Timber more than Anthony in my opinion. I think Lisandro Martinez अगर आते हैं ना, he is not a bad option. GG Ayush. Lisandro Martinez is left-footed if I remember right, तो he is not a bad option as well. तो वहां पर एक वेरिएशन भी मिलेगा. तो let's see. हाँ, Arsenal will be bidding again for Lisandro Martinez, but I don't see him going to Arsenal. The reason being that कुछ ज्यादा ही competition हो गया भाई. Arsenal है, come on. I know, no disrespect to Arsenal, but modern Arsenal, they cannot have a Gabriel, Lisandro Martinez, a Ben White as well as Saliba. Come on, वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा मेरे ख्याल से. So that is why I'm calling the United might go, because Eric Bailly will be going out as well वहाँ पर ना. Well, no problem. Football will comment. Big up. What's your thoughts on La Liga? मैंने देख लिया था. Sterling as a signing, your opinion looks like he's a marquee signing this season. Yes, again, Super Tommy Tuchel and everyone watching as well. Please, I would request you all to please subscribe to Almighty Sports Plus भी, क्योंकि वहाँ पर people might think we are doing cricket. नहीं, that is part of the content. We do a lot of football content वहाँ पर भी, including transfer talks, including international football. और वहाँ मैंने Sterling, Nathan Ake और Dembele के बारे में डिटेल में दिया है talks, my reaction, of course the chat reaction से बात भी की है, और that video is regarding Chelsea, Man City and Barca transfers. So please go check it out. I'll come back if time permits. Well, he's more a centre half in my opinion. He's more a centre half, so I don't think you can count on him as a DM. लेकिन हाँ, as a centre half you need. यार Maguire is there, but come on, we know that Maguire will not be starting 38 games in my opinion. Okay, Barca versus Chelsea, now it can compete with 2011-12 hype. देखते हैं भाई कौन कहाँ जाता है. अभी काफी kind of hanging in between, तो अभी बोल नहीं सकते. What is the situation? Dembele कर दिया मैंने. I feel Chelsea have been short-sighted, haven't prepared backup for the back line, knowing more than that ना, Chelsea haven't even prepared for their club. और हमारे क्लब के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है. हाँ, that's a great point. Zuma, Livramento, Lamptey, Gehi, Tamuri for peanuts. मैंने बाबा से बात ही की थी. I think 2-3 दिन पहले हमने स्ट्रीम किया था, उसमें हमने डिटेल में बात किया था that मैंने बाबा and चिराग ने कि we basically let all these players go within 18 महीने. It is not done. If it is, हाँ, उस समय we didn't expect our new ownership to come in. That was the problem. But at the same time, you prepare for the worst, you hope for the best. That's something that you always do in any business. And it is a business, let's be honest. I agree with Manav यहाँ पर 100%. Yeah, CFC Blues, sorry I took your super chat but late, but again big up to CFC Blues, thank you. एक ही दिया था ना आपने. हाँ, लेकिन thanks a lot, means a lot for sure. Any support means a lot. Ankit, I think Shaw, Telles and Dalot are staying. High chances of Van Bissaka leaving. Exactly. इसलिए मुझे लग रहा है right back is more likely than a left back coming in for Manchester United. 4K हो गया. Big up to the fam. Okay, thank you everyone. It means a lot. But again, it is just the start. So everyone, please continue the support. और भी please लगा दो 2-3. The fact is, because at the end of the day, the channel is run obviously because of the content, but most important, it is run because of you guys. तो अगर आप लोग नहीं हो, especially coming from Manav, a member, it means a lot. And like I said, we do a lot of content. It's just not Chelsea. It's
basically all top 5 leagues, international football, Indian football. Intent is to do a lot more and a lot more entertainment. तो आपको मजा आने वाला है कमिंग डेज में. ऑफ कोर्स ये तो वर्ल्ड कप ईयर है भाई, काफी होने वाले हैं ऑन बोथ आवर चैनल्स. सो अगेन चेक आउट द लिंक्स बिलो. बट यस, थैंक यू पास दिस वे. गुरुजी को सॉरी बोलना प्लीज. अरे क्या हुआ भाई, गुरुजी बिग अप यार. लेकिन क्या हुआ अभिषेक, नॉट श्योर क्या हुआ यहाँ पर, लेकिन गुरुजी लव यार. Tottenham could be title contenders this season. The team that Conte is building looks scary. Going by Fabrizio Romano's tweet, लग रहा है अभी भी टॉटनम 3 और प्लेयर्स के लिए जा रही है. इमेजिन अगर, अच्छा मुझे प्रॉब्लम क्या है ना टॉटनम में, मैं बोलता हूँ डायरेक्टली फरहान, उनका जो बैकअप स्ट्राइकर जो इतने सालों से आ ही नहीं रहा. हाँ बीच में आई थिंक लोरेंटे आए थे फॉर वन सीजन एंड ऑब्वियसली दे रीच द चैंपियंस लीग फाइनल. इमेजिन, तो दे आर हैविंग एन एबिलिटी टू डू दैट, लेकिन दे डोंट हैव दैट बैकअप स्ट्राइकर. एक बैकअप उनका स्क्वाड अच्छा बनाना है उन्हें. दैट इज व्हाट आई थिंक कॉन्टे इज ट्राइंग एंड आई एग्री दैट वो फाइट करना चाहेगा. बट रियलिस्टिकली भाई लिवरपूल, कम ऑन. यहाँ पर हम बात करें जीनी वाइनल्डम कमिंग बैक, बेलिंगम कमिंग इन द फ्यूचर, डार्विन नूनेज, वहां पर हालैंड, अल्वारेज, ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर्स है. कम ऑन, आई डोंट थिंक यार सिटी और लिवरपूल को compete करेंगी in 38 games. But I can see that Conte, who's not a cup manager, finally may get close to a cup. Let's see. कुलीबाली नहीं जाएगा बारसा, इट्स कंफर्म्ड. हाँ, मोर लाइक नापोली नहीं देगी कुलीबाली को, क्योंकि नापोली बहुत ही चिंदी है. सॉरी नापोली फैंस, नापोली बहुत ही ज्यादा चिंदी है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स, जस्ट लाइक सेविया. Why Arsenal not targeting Patrick Schick? क्योंकि Patrick Schick has just renewed last year, if I remember right. तो Patrick Schick बहुत ही expensive होने वाले हैं. I don't think Arsenal can afford that much for Patrick Schick, in my opinion. They might be able to afford Jesus, जो आएंगे 40-50 million या 55 million at max. Patrick Schick मेरे ख्याल से उनकी कॉस्ट होगी somewhere around 60-70, somewhere closer to जो Havertz का हुआ था. और remember, he was a Havertz replacement in Bayern Leverkusen as well. Can you see Messi returning to Barca next season? I can see, but do I predict? I don't. Unfortunately मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है as much as he loves Barca, Barca loves him, and of course people would like him basically to win the World Cup as well as finish with Barca. वो एक है dream बहुत सारे as in footballing fans का. लेकिन at the same time, don't you feel कि a Lionel Messi, I know he's not finished. He has a couple of good seasons in him. Don't you think that he should probably should do more for football, maybe in other countries as well? I'm just putting it out there. Nothing against Barca or Messi, but I'm just saying that maybe a Messi, mere liye he comes across as that person. Like, what a Beckham did towards the end. I know I'm putting Beckham in the same bracket. I shouldn't be. Like, just doing more for football. That is what Messi is. So I think maybe he'll move on to US or something, in my opinion. Maybe not next year, लेकिन next to next season move करेंगे. That's what I genuinely feel. हाँ, उसके बीच में 6 महीने का लोन लास्ट में कर ले यूरोप में एक और. I don't mind that, Ethan. Absolutely. Thank you, Just Viola, and big up to Just Viola as well. Just Viola has been on the channel probably right from month 1. So big up to Just Viola as well. Rudiger himself said Marina didn't talk to her. Marina didn't talk to her, but again, like, is it solely Marina's decision on basically doing? I think it's probably a team decision. Again, we are talking about organizations here. But I would start the blame with her. But hasn't she done a lot of good things as well? Negotiating. Remember, हमें मोराटा के लिए वापस पैसे मिले थे भाई, हमें हजार्ड के लिए आज तक मिल रहे पैसे. तो there are certain deals जो negotiating tactics है, जो business perspective वो Marina was good at. Footballing perspective, timing, she's not very good at. I agree 100% वहाँ पर. 40 million for Martinez, 75 million for Frankie, 55 million Anthony, Eriksen for free. Can Manchester United sign these players all? Well, let's see. Frankie 75 million नहीं आने वाले. As per report 85 देना पड़ेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को. ठीक है, 85. एंटनी might come for 55. वो मुझे likely लग रहा है. हाँ, that is more doable. लेकिन एरिक्सन अगर आ जाते हैं, then they might go for Eriksen, Anthony and Lisandro Martinez. That is more possibility. Can they get all the 4? I personally doubt it. मैं बोलता हूँ उसका रीजन. आप देख रहे हो यहाँ पर literally as in 2 players from the same team, Man United getting. I don't see that happening. They might get 1 player at best. हाँ, they might get Dutch players totally 2-3 और Dutch connection वाले players 2-3. लेकिन I don't think एक ही क्लब से उनको मिलने वाले 2 players. I really don't think so. People are really feeling that दे देगी Ajax. लेकिन Ajax क्यों देगी भाई? Sebastian Haller, people, there is news. Sebastian Haller is basically I think Dortmund ने किया है bid, if I'm not wrong, right? तो Dortmund ने किया, I think it's 30 odd million. So what do you think? Sebastian Haller, I
हग्गा था प्रॉपर विद वेस्ट हैम इफ आई रिमेंबर राइट, लेकिन कैन ही बी अ फिट व्हेन इट कम्स टू डॉर्टमंड फुटबॉल क्लब? आई थिंक व्हाई नॉट. द फैक्ट कि उन्होंने यूरोप में किया है, एरेडिविजी कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू बुंडेसलीगा, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं इन क्लास. सो आई कैन सी सेबास्टियन हेलर माइट बी वर्किंग फॉर डॉर्टमंड. बट व्हाट डज दैट मीन? आई नो उन्होंने किया है, अडियामी को साइन, अडियामी है, सेबास्टियन हेलर है. What about Malen? Malen is also like an inside forward. So I, as a Dutch fan, am not too very excited about that. Lekin fact is, Malen has underwhelmed. So Sebastian Haller to Dortmund, I would say mighty, mighty rating. By the way, people do not know, we rate here mighty, almighty. Almighty is like, hone hi wala hai. Mighty is like 8 out of 10 kind of rating. So is kind of average rating. स्क्रीनियर को भूल जाओ, पीएसजी आ रहा है. अरे रिफात खान, पीएसजी फैन इन द हाउस. आई डोंट माइंड कि स्क्रीनियर को भूल जाऊं, लेकिन अगर पीएसजी सस्ते में ले दी ना, तब तो नहीं भूलना पड़ेगा यार. वी नीड स्क्रीनियर इफ ही इज कमिंग, ही इज गोइंग फॉर सस्ता. इफ ही इज गोइंग फॉर समथिंग लाइक 80 मिलियन जो क्लेम कर रहे हैं इंटर मिलान, देन गुड रिडन्स, गो टू पीएसजी. गुड प्लेयर बट नॉट 80 मिलियन. ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ मेक रीस जेम्स राइट सेंटर बैक. ऐसे भी टूकल 3 द बैक लग रहा है वही खेलने वाले, लुकिंग आफ्टर कुंडे लिंक्स. तो आई फील दैट डमफ्रीज का लाओ. डमफ्रीज rather will come for or 25 million, get him in, that's it. Okay, so as per reports, हमने बात की थी एटलेटिको मैड्रिड के डायरेक्टर बर्टा is the name, but if he is not coming in time, meanwhile it is expected that it will be a trio of hear it out, Todd Boehly, Thomas Tuchel and Petr Cech. That's what it's मतलब स्टॉप गैप है. ऑब्वियसली बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक चेल्सी, प्रीटी श्योर वो आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि कौन होंगे, बट आई एम काइंड ऑफ सरप्राइज कि इतना जल्दी हो रहा है ये सब और अभी हो रहा है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट जिनचेंको's फ्यूचर? ओके, जिनचेंको इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन. A person who was moved from midfield to left back and then plays still as a cam in the national team. और इतना पैशन जो रखते हैं, he wears his heart on the sleeve, but at the same time defensively थोड़ा सा vulnerable है. I feel that kind of a player maybe top club नहीं लेगी as a starter. ठीक है, again no disrespect to any club or him. मुझे लगता है आर्सेनल फैंस मैं देखा हूँ काफी लोग बोल रहे हैं कि they would like a Zinchenko because they anyway need someone who can kind of cover for Tierney at left back and can be a DM as well because Xhaka is not so convincing week in week out. तो वो लग सकता है, वो भी लेफ्ट फुटर है, तो kind of, I know very different personalities, very different physique, lekin Zinchenko is a ball playing left back and midfielder, so I think proper Arsenal fit ho sakta hai in my opinion. Again, maybe Pep and Arteta links, who knows, he might go there. Bhai, what do you do after how many days? What do you think after how many days will Frankie deal be done? I think it's about the fee. Agar 85 million kar dete hai, I think talks will again restart with Frankie. I don't see 85 million से कम टॉक्स शुरू भी होने वाले. That's a reality because 700 million मिल गया. Barcelona have the money, so they don't need इतना पैसा अभी immediately. हाँ, if they are getting a sniff कि भाई बर्नार्डो सिल्वा available है, वो खुद आना चाह रहा है, they might get tempted. That is the point. So it depends on Bernardo Silva. Why Arsenal are targeting? मैंने ले लिया था. Thoughts on your about Vitinha and Renato Sanchez to PSG? हाँ, मैंने ये शेयर किया था वॉच अलॉन्ग में, आप शायद नहीं थे, लेकिन Vitinha to PSG again decent player. I would not say कि यार out of the world player है, लेकिन at the same time एक someone who does the dirty work, वो वाला player है. तो उसी लिए क्या हो सकता है ना, your Verratti से ज्यादा creativity मिले और that might be helping PSG. At the same time इसीलिए मुझे लग रहा है Gini Wijnaldum to Liverpool on loan actually makes sense. थोड़ा सा domino effect लग रहा है यहाँ पर, तो it can be a good fit. हाँ, he might do better than Wijnaldum जो last year किए थे. As much as I like Wijnaldum more as a player, definitely. Renato Sanchez ये interesting है. मतलब मैंने initial part of the stream में बोला है कि Renato Sanchez, हाँ, you can argue that you don't really need a Renato Sanchez क्योंकि आपके पास already Verratti है, आप Vitinha sign कर रहे हो, basically you're having obviously Idrissa Gueye, you have obviously the Manchester United legend, as I like to call him because he wears his Manchester United badge on his arm, that is Andre Herrera. So you have a lot of players there, but at the same time Renato Sanchez brings something totally different. तो एक स्क्वाड के लिए it's more like a Champions League pick in my opinion. Renato Sanchez is not your player. I know Liga
लीगा में काफी एक्सपीरियंस्ड है, बट ही इज नॉट योर प्लेयर जो आपको वीक इन वीक आउट करने वाले इन द लीग। इन माय ओपिनियन ही इज मोर लाइक दैट इम्पैक्टफुल प्लेयर जो आपको चाहिए, जो आप पोर्चुगल के साथ में देखे हो इतने सारे सालों के लिए। तो आई थिंक रेनाटो सैंचेज टू पीएसजी मेक सेंस। अगेन पीएसजी आर बिल्डिंग अ गैलेक्टिको, सो कन्विंस करेंगे, बट विटिनिया वुड बी I think arguably a more important signing in the short term. Jonathan David, the new number 9 for Chelsea. I know a lot of people are talking about it. I frankly do not see this happening because again, हमने उनके क्लब के साथ खेला था recently and I don't see that उन्होंने इतना basically influence किया था. Maybe he comes but not as a starter. वही प्रॉब्लम, हमें चाहिए एक स्टार्टर। आई नो हैवर्ड से आप आर्ग्यू करोगे, लेकिन वी नीड अ पर्सन हु डायरेक्टली कम्पीट विद हैवर्ड वीक इन वीक आउट इन द प्रीमियर लीग। अभी के लिए आई एम नॉट सो कन्विंस्ड एज मच एज मैं कैनेडियन फैन भी हूँ, बट जस्ट सेइंग इट आउट देयर। राफिनिया, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, आर्सेनल, बार्सिलोना। अभी लग रहा है आर्सेनल फ्रॉम व्हाट थिंग्स, बार्सिलोना इतना पे नहीं करेगी। चेल्सी अगेन नॉट अ बैड डील, बट द फैक्ट इज यार वी आर प्रेफरिंग ऑन अ पर्सन हु इज मोर फॉरवर्ड थिंकर लाइक स्टर्लिंग, ठीक है, स्टर्लिंग और गैब्रियल जेसूस। तो मुझे लग रहा है आर्सेनल लग रहा है अभी। मैनचेस्टर यूनाइटेड, राफिनिया, मुझे लग रहा है एंटनी दे विल बी एबल टू गेट एंटनी, आयुष आपको एंटनी मिलने वाला है, मुझे ये फील आ रही है। In 2023, Barca frontline superb, Messi at right wing, Leva at striker. Arey bhai, talk about dreams. Can Conte Spurs? Yes, I just told it. Third finish karegi as things stand, but obviously I would want Chelsea to do some transfers in as well, not just exits. Obviously, we have got so many exits by already. Rudiger, Christensen, if you can call him that. He's an exit for sure. लेकिन हाँ, Aspilicueta will be interesting अगर वो stay करते हैं. But the fact is we need to get some more defenders in so that we are at least secure. एक होता है ना डिफेंस से आप बिल्ड करो, तो that is what Tuchel believes in. So I think अभी भी थोड़ा मैं रखना चाहूंगा अपना prediction close to my chest. But as things stand, let's be honest, Spurs have been making better transfers, and not just that, they are looking like a more positive unit than what they were. Okay, yeah, he's going to stay. मैंने कल बताया था, by the way, again, yeah, people shout out to my other channel, that's Almighty Sport Plus. वहां पर भी बढ़ाइए काफी, and hopefully you subscribe to both our channels because we have discussed about this. So मुझे लगता है Cristiano might actually be the captain for next season. Again, people, let me know who's your captain for United. La Liga team of the season or Premier League team of the season? Interesting. I think this time in terms of league, I would go for the Premier League. लेकिन चैंपियंस लीग में भाई ला लीगा रॉक, स्पेशली रियल मैड्रिड, ओनली दिस सीजन है। नहीं तो वी वर चैंपियंस ऑफ यूरोप जस्ट 12 महीने पहले। लिसांड्रो मार्टिनेज मोर फॉर डीएम हु कैन प्ले सेंटर बैक rather than the other way around. Great ball playing ability, long ball vision. Okay, Manav, I know what you're saying, but I think the way United plays now, I don't see him being that mobile DM. I see him more like a center back. I really believe that. In fact, I see एक और है, I think who's this guy? I think Enzo Martinez, what's his name? Enzo Perez, Enzo Martinez. There are two players, right? There's another player, Dutch football. He's a better DM in my opinion than Lisandro. But center back में in United, the way they play, I think he can be a better fit than Harry Maguire for sure. Would you take CR7 if available in Chelsea? People will say no. Come on, he's not Chelsea DNA. Yeah, I'm just letting you know, people. Mark Hughes back in the day came to Chelsea from Manchester United, if I remember right. We took Sparky, as you like to call him, right? So there are a lot of calls. I know CR7 is a goat. Manchester United loves him. But given a choice, definitely. लेकिन FIFA नहीं आने वाले. I will take him, yeah. That's bottom line. एक सीजन के लिए डेफिनेटली हमें स्टॉप गैप चाहिए अभी. That's a fact. I hope लॉन्ग टर्म सोचकर हम आज का भूले नहीं, क्योंकि 5 साल हो गए लीग जीते हुए. और एज इट इज इतने चेंजेस है भाई, तो वी नीड एक्सपीरियंस. मरीना एंड ब्रूसबर्ग लीविंग इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. आई थिंक इट इज डेफिनेटली डिसएडवांटेजेस. मैं फेंस पर नहीं रखूंगा. It is definitely disadvantages. Both of them leaving is not disadvantages. Both of them leaving together, अच्छा, जो potentially लग रहा है, and basically just 2 weeks after getting a new owner. That is the main problem. I think ये 2 महीने और रह जाते till the transfer window ends, and then they would have done whatever they wanted. कोई नहीं आएंगे यार, कोई नहीं. Thank you Abhishek, thank you. In your opinion, which transfer will be a best transfer between Chelsea, Man United, Liverpool and Man City, suppose as they sign Haaland, Nunes, Sterling and Frankie de Jong respectively? Like, I don't think हम compare कर सकते हैं. हाँ, need for every team is different. आज के दिन में I think we need someone
in a DM position, being a Chelsea fan. We need someone in a centre back position. We need someone in a striker position or wide forward who scores goals. ये तीन main needs है Chelsea के. Are we getting those with Sterling? No. Whereas what did City need? City just needed the number 9. They have got it. ठीक है, maybe a backup left back, they will get it. Mark Cucurella, वो imminent लग रहा है. Liverpool, what did they need? They needed a backup right back. उन्होंने एक youngster sign कर लिया वहाँ पर already. They needed a backup CDM. वहाँ पर Wijnaldum के talks चल रहे हैं जो who can also play there and do a role एक season के लिए. And they have signed a number 9 to kind of replace Sadio Mane. और जनवरी में ऑलरेडी साइन लुइस डियाज. तो अब देखो उनका जो है ना बॉक्स कंप्लीट हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल का, वेयरएज चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का अभी शुरू हो रहा है. तो आई थिंक वो कंपेरेबल है ही नहीं. आंसर डेफिनेटली होने वाला है मैनचेस्टर सिटी आज के लिए, बिकॉज दे वन द लीग एंड देन दे साइन वन पर्सन, देन लिवरपूल, देन आई वुड से चेल्सी, देन यूनाइटेड, क्योंकि यूनाइटेड का सबसे ज्यादा ट्रांजिशन होने वाले इन माय ओपिनियन. मे बी सेकंड चेल्सी, बिकॉज अगेन चेल्सी इज एटलीस्ट वन ट्रॉफीज रिसेंटली, तो एक है मतलब एक डीएनए चेल्सी का, इतने चेंजेस होते फिर भी वी कीप विनिंग. यूनाइटेड, व्हाट द बिगेस्ट क्लब इन द कंट्री, दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बिग अप टू नगातो, आई बिलीव नगातो है ये, और नगातो बिग अप, नाइस टू सी यू ऑलवेज, एंड गुड डिजाइनर इन द हाउस. गुड्डू पांडा इन हाउस, वेल, लव यू अंकिल, लव यू टू एज वेल, कांग्रेचुलेशंस. ओके, मैं काफी स्लो हूँ. एसी मिलान भाई, मतलब आई वाज होपिंग रेनाटो सांचेज, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहे. I don't see that happening now, but yes, big up to Thug Sports as well. Thug Sports has just completed 1 year, I believe. Pretty sure आप लोगों ने देखा है Thug Sports को. आयुष भाई and team are definitely working hard, coming back content creation, I believe. But yeah, pretty sure हम बात करेंगे season में. And thanks a lot Thug Sports, like all the content creators and everyone watching as well. But it's just a start. It's just a start, भाई. हमें करना है काफी और अभी. Will Ronaldo leave Manchester United for Champions League football and he'll go to Bayern Munich? हाँ, ये again it's more like a fan creating a rumor, लेकिन मुझे नहीं लगता ये होगा this season. Maybe January तक he might make a move if convincing नहीं लगे Erik ten Hag. Okay, the difference between Barca and other clubs is that despite Barca's poor finances, still world class players want to play for them. That's not the case for others. That's a power and pull of Barcelona. Unfortunately, I agree, and that's, I'm saying unfortunately because as a Chelsea fan, ये था towards 2010 और 20 के बीच में वापस से हमें हमारा डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो गया. वो प्रॉब्लम है थोड़ा. एएस रोमा लिंक विद मार्शल सबित्सर एंड गुंडोगन. अच्छा भाई, ब्रिलियंट. हाँ, मैकेटेरियन मैंने स्टोरी कवर किया कि ही माइट गो टू इंटर, बट नाउ एएस रोमा विद सबित्सर एंड गुंडोगन फॉर अ मोरिनियो. दे आर ब्रिलियंट साइनिंग्स. यस, गुड पॉइंट बाय मानव, एब्सोल्युटली. यार सेरिया अगेन भाई, मैं तो सेरिया का फ्लैग झंडा लहराते रहता हूँ. And I say it's basically आपको अगर enjoy करना है proper competitive football in terms of दोनों sides, और generally इतने सारे sides competition में है, that is Serie, because you have Inter Milan doing madness in the transfer window, you have AC Milan the champs, you have Juventus जिनके काफी players injured थे, they are coming back, and you are seeing Roma now, so check it out. Or Napoli, you can never count them out. Will Raphinha go to Arsenal? Looks like it. हाँ, थोड़ा सा negotiate करना पड़ेगा, but मेरे ख्याल से हो जाएगा, what my gut is saying, because Leeds to Manchester United or Chelsea is difficult than Arsenal in terms of the geography as well. हाँ, और Raphinha might want Champions League, but I think he'll be happy with the Europa League. Okay, fair enough. It's your call. I kind of not agree, but I won't call them out. मतलब वही है, Conte cup competition इतने अच्छे नहीं करते. I can see him doing well in one of the domestic cups though. Why, what will be Manchester United attacking drive? Anthony will be added in the squad of Man United. Well, Anthony तो definitely शुरू करेंगे, because pretty sure Elanga, as much as he's impressed, he's not a starter. Sancho from the left hand side, Anthony on the right hand side, and up front obviously the GOAT Cristiano Ronaldo, that is obvious. लेकिन हाँ, I feel Rashford एक striker जैसे use करे जाएंगे. That's my gut. Mario Götze confirmed for 4 million. Okay, interesting. Great player once, but sad to see his career go downhill so early. Yeah, but Manav, at the same time, I think what Mario Götze has achieved in football, he'll be pretty content. Let's be honest. But yeah, I understand. Like, bhai, different level. Between 2010 and 2015, he was, wow, that kind of player. But not a very, very long period then. Yeah, as I said, exactly. Are you expecting Hazard coming back next season? No, I'm not expecting, because I am expecting him to do well. I don't know if people you heard it. Yes, Chelsea fans love him to the core, but he also wants to do something for Real Madrid after उसने
जीता है भाई, कप जीता है. तो आई थिंक ही हैज समथिंग टू गिव बैक टू रियल मैड्रिड. एंड I think Martinez ने बोला है, Martinez, their Belgium manager, has actually gone record saying that he's actually looked the sharpest and the hungriest in recent years. That is a statement and a half for sure. Your favorite team to win World Cup? My favorite team definitely Netherlands. पता नहीं आप देख रहे हैं क्या, ये 2010 Netherlands का जर्सी है by the way, वाका वाका वाला. But हाँ, that is my favorite team to win the World Cup. That's what I want. जो मुझे लगता है होंगे favorites on paper, I can kind of say that it's one of the most difficult World Cups to call. हाँ, you can say Brazil or Argentina have an upper hand, लेकिन taking conditions into picture, taking basically the season into picture, क्योंकि यार उनके जो players है काफी scattered है around Europe. तो I would rather say again, you might say you're going left field, लेकिन भाई मुझे लगता है फ्रांस और पोर्चुगल की जो स्क्वाड है ना, they are not doing it right at all, especially Nations League में हमने देखा है. But I think they might peak at the right time. So who knows? So again, मैंने 4-5 टीम के नाम ले लिए, उसमें से एक होने वाली है. But I'll come back to predictions. We are doing a proper World Cup series which we are planning to start this weekend. By latest news, Manchester United preparing to deliver 75 plus add-on. Yeah, that's what it looks like. वो add-on will add to about 85. Messi to Chelsea हो जाए. Unpopular opinion, Messi will renew with PSG. Divyansh, I think it's pretty popular. In my opinion. मतलब he has lots to prove, plus एक new manager आने वाले, तो I think it can only get better. नेवेज अभी नहीं आने वाले, नेवेज नहीं ला, मुझे नहीं लग रहा, because the story somehow gone. I think backup आपका एरिक्सन है anyway. Yeah, exactly. Bro, glitch हो रहा है, I don't know. People, are you able to hear or there's a problem? I don't know. I think I might have missed some comments. I hope there's no problem in the audio. PSG stole Renato from Milan. Your opinion? Yeah, not happy about it at all. Not happy about it at all. Lekin I understand, it's a Liga player going to a Liga side. होता है Liga में भी. Like, come on, let's be real. Milan as much as हमने जीता है, आज के दिन में I know PSG, you can say, bottled again the Champions League. Compared to Milan, they are favorites more compared to Milan for the Champions League. That's a reality. Or you get a chance to play with the Messi. Would you say no? Really? Come on, वो नहीं होने वाला. और आपको पैसे भी मिलेंगे. और आप कंट्री में नहीं बदल रहे हो. आप यंगस्टर भी हो. और ऐसा नहीं कि the team is depending on you for every game. He is basically an add-on to what they already have. So going by the injury record, it will be a perfect move for Renato. Yep, thank you. Again, City should hold on to either Gabriel Jesus or Raheem Sterling, otherwise it's too big a void to fill. Well, I understand Manav being a City fan, आप क्यों बोल रही है? लेकिन भाई, I think it's clear that he's seeing a vision. Pep का vision आप सब जानते हो. Julian Alvarez को लोन पे नहीं भेज रहे. Then you have Erling Haaland. Remember, Jack Grealish अभी भी proper unleash नहीं किया आपने. Jack Grealish को unleash, नहीं किया अभी, तो that is still left. So I feel City are good hand. Don't worry about it. और especially अगर आपके midfielder आ गए भाई, Calvin Phillips, तब तो you might change your formation also. Who knows? मैंने बात कर ली ऑलरेडी पोर्चुगल, अर्जेंटीना, ब्राजील की. Ajax starting 11 is going vanished from the club, but that has been Ajax. लेकिन at the same time मैं यहाँ agree नहीं करूंगा कि यार you will have so many players going at once. And again, Madrid also, I don't see that they need many players in my opinion. Ajax, I don't see that so many will leave at once. That's just my opinion. Haller going looks imminent. Anthony leaving looks imminent. So उनकी forward line थोड़ी problem होने वाली है definitely. But apart from that, yes, Mazraoui is gone. Then I can see maybe one defender more going. I don't see beyond Martinez anymore else will go. I think 4 players is what they'll get rid of. I don't think they can get rid of more. Otherwise, Eredivisie will be also gone. Marina Didi to leave. Yes, Ishad, you have joined late. I just reacted on what her plus and minuses were in the beginning of the stream. आप देखिएगा जरूर along with Bruce Park. भाई डेम्बेले और रफीनिया कहाँ जाएंगे? चेल्सी और बार्सिलोना मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया. पीएसजी भी 3 द बैक में जाएगा. पीएसजी ले रहे हैं स्क्रीनियर को 65-70 मिलियन में प्लेयर. रिफात, आई डोंट थिंक 65-70 में मिलेंगे. आई थिंक ये 75-80 हो जाएगा, लेकिन ब्रिलियंट साइनिंग होगा अगर होगा तो. Where will Dumfries play? James. Dumfries will play right wing back. He might start 25 to 30 games a season. He will play right wing back. James will be right center back in those games. Or काफी दफा James will be right wing back. Dumfries will be coming off the bench as an impact player. He can play the proper winger भी.
Take Lord Harry from Man U. He will be more suitable in back three. Nine, nine. Did you know if any of France finished second in the World Cup group, they will face Argentina in the World Cup round of 16, and we can see the rematch of the last World Cup. Somehow, if France finished second, yes. So again, we'll come to permutations and combinations again. I think Zinchenko is very underrated. Your thoughts? I think he's underrated. I don't think he's very underrated. The fact is, yeah, defensively he is having some issues. मतलब हाँ एक होता है reader of the game versus someone who's quick at the same time. वो एक combination. He's not got it at left back as much as you would have liked as a City fan. इसलिए तो City are letting him go. इसलिए City are not starting him week in week out. So there is a problem in terms of footballing ability, but in terms of a trier, in terms of the skills, why he's underrated. I agree. Should Javi go for back three if Alonso and Aspi go to Barca with Kunde? एक तो भाई चेल्सी दोनों को मत दो भाई. Come on, we are competing with Barca as much as I respect Barca and big up सब Barca fans को, लेकिन यार दोनों को मत दो, एक जन को दे दो और आर्ग्यूबली मैं बोलूंगा अलोंसो जाओ, एसपी रहो. हाँ, in case you get two of such full backs, let's be honest, if you're playing them as full backs जो स्पेन कर रही है गलती, I don't see that surviving in the Champions League. ठीक है, चैंपियंस लीग में they'll get properly battered, so they need to go through the back. लेकिन हाँ काफी दफा आई थिंक सादिक भाई से बात हुई है, so काफी दफा they already go through the back when they are kind of having that position. So I think it's the way that Javi plays on the pitch in between the game as well. Who can replace Salah if he leaves except Bowen? ये interesting question है. मतलब I won't be surprised. I know I'm kind of calling left field यहाँ पर, लेकिन as always अगर हावी एलियट को Klopp somehow turns him into that kind of prolific goal scorer, I won't be surprised. That is Klopp for you. So Harvey Elliott, it'll be unleashing Harvey Elliott as well. He kind of came back last season के end में, लेकिन अभी he'll get और भी ज़्यादा matches. So that is something that I'm really seeing. और by the way यार people, there are about 75 people watching. हम सवा घंटा से बात कर रहे हैं और काफी सारा न्यूज लाए, काफी सारा ओपिनियंस लाए और भी लाएंगे. We'll take your comments, and of course thanks again for everyone joining super chats and memberships as well. But do not forget यार like कर दीजिए stream को. Likes काफी कम है, तो we should be having at least 250 likes अभी as things stand. ठीक है, so let's have likes. It doesn't take a buck, and same goes for subscriptions. And again thanks a lot for 4K. Similarly we are on the road to 4K on Almighty Sports Plus. Well, we'll come back on this DG Ayush क्योंकि वर्ल्ड कप का प्रॉपर हम करने वाले हैं, तो अभी सब नहीं दूंगा मैं. रेनाटो सैंचेज इज गोइंग टू एसी मिलान. ये किसने बोला भाई? मुझे लग रहा है नहीं जा रहे. एसी मिलान का अनफॉर्चुनेट नहीं हो रहा कुछ. डू यू थिंक रेनाटो विल फिट इन द स्क्वाड हैविंग वेराटी एंड हरेरा? द फैक्ट इज अगर अगेन दे आर साइनिंग टू मिडफील्डर्स, तो थोड़ा सा हो सकता है कि क्लॉग्ड मिडफील्ड, लेकिन एट द सेम टाइम आप बोलोगे यार you are PSG, you are creating a galacticos. I think he can be managed because Renato anyway is not fit enough every week. So I think वो manage कर सकते हैं depending on who the manager is. And of course, a manager coming from Liga certainly helps, right? Galtier, अगर वो आ रहे तो. PSG are almost hijacked Renato. Yeah, I know that. Salah back to Chelsea as free agent. अरे भाई, this is something that will be a wishful thinking, but होने नहीं वाला. We know, unfortunately, he loves Liverpool much more right now. I know. Loyalty is not a thing anymore, but I don't think next season तक हम wait करेंगे. We'll probably go for a bigger name this season itself, or maybe max by January. और वो होंगे Sterling. Mighty लग रहा है मुझे. Koulibaly or De Ligt, I think only one can be signed this season. Well, we might, मुझे लग रहा है wait for De Ligt because हम कुंडे के लिए, I think कुंडे might end up in Chelsea. Just my gut. कुंडे might end up in Chelsea because नापोली के साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशन नहीं है. Not that Sevilla के साथ है. लेकिन कुंडे इज समथिंग जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. निजार कंसेला ऑफ द लाइक्स हैव सेड दैट कुंडे हिमसेल्फ वांट्स टू बी इन चेल्सी एज वेल. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट गोइंग देयर अभी भी, तो वो अभी भी चल रहा है. कंपेयर टू कूलीबाली वहां पर इट्स ओनली वन साइडेड कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट. तो दैट माइट बी अ थिंग फॉर द फ्यूचर. सो हो सकता है डिलीट आए इन जनवरी और बाय द एंड ऑफ द सीजन. आई डोंट सी डिलीट कमिंग राइट नाउ बिकॉज आई सी दैट हम spend करेंगे on a Sterling for example, on a midfielder for example. I still feel we'll spend on them. लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर डम्फ्रीज नहीं आ रहे इंटर मिलान से, इफ वी आर गोइंग फॉर क्लाउस द राइट बैक जो मैंने बात किया था फ्रॉम लॉन्स, देन माइट बी हम पैसे बचा रहे हैं फॉर डिलिक्ट. हू नोस भाई. कैन मैनचेस्टर यूनाइटेड हाईजैक कैल्विन फिलिप्स डील? आई डाउट इट, highly doubt it. Again, nothing against Manchester United. The fact is you have I think
City, who are champions, who are in the Champions League, who are able to rotate much smooth in a smooth manner compared to United in the recent past. I know different managers for United, फिर भी तो आई थिंक क्लियरली विनर इज गोइंग टू बी मैनचेस्टर सिटी प्लस मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ आई थिंक ज्यादा राइवलरी लीड्स की, इफ आई रिमेंबर राइट. What is the price tag of Pau Torres? Not spoken about enough. I think I believe it's in the region of 60 million or 70 million. 60 to 70 is what I heard last, but again, I might be wrong. That's why I'm saying, why Jules Kunde? Why not Pau Torres? Why 70 million do और खरीद लो Pau Torres को. Are you expecting Hazard? मैंने ले लिया. Please do not spam people. Come on. Antonio Conte won the league with Victor Moses, Alonso and Bakayoko. No, not with Bakayoko. Bakayoko was signed in 17-18. Correct me if I'm wrong. 17-18 he was signed. We didn't win the league that year. 16-17 में yeah definitely Victor Moses, Alonso, David Luiz sign किए गए थे वापस. He can do wonders and I agree he can do wonders. They can again 2017 season when a couple of legendary managers हो गए legendary. We're talking about Klopp and Pep were fairly newer. He did better than them at the time, so you can argue that. But now they are more ready with their teams. I don't think he can win it, but he can certainly challenge. Yeah, exactly. Andrea Berta, again, we've covered this. Barta, we are in the house, and do let us know what do you think about Atletico Madrid's transfers, because that might be the thing. Lekin, the reason why I'm not happy as a Chelsea fan is because अगर नया आता भी है ना, he or she will take at least 1 month to settle. आप basically connections करोगे, वापस से शुरू करेंगे talks, most of the things. So I don't think we are going to get the deals early before pre-season. At least the ideal deals. और हो सकता है कुछ deals we miss out, just like we missed out on Perisic, for example. So a lot of things will happen, right? Edson Alvarez is the deal we're talking about. भाई साहब मैं इतना पीछे हो गया chat में. Edson Alvarez, yeah, he's the guy. Edson Alvarez, that Enzo Perez is probably, yeah, he's the Argentine. That's correct. What if Chelsea hijacks Julian Timber deal from United? Julian Timber, भाई, again, काफी दफा क्या होता है ना, players are linked to clubs and then they get hyped. The Julian Timber is good. I don't think he's a world beater. I don't know why United fans इतना नाखुश है Julian Timber, जो हुआ है लुई वैन गाल का एपिसोड से. Come on, मैं जूल्स कुंडे से भी नाखुश नहीं हूँ. अगर कल के दिन में जूल्स कुंडे doesn't end up at Chelsea, I'm okay, यार, big deal. If you're, come on, being a United, being a Chelsea, don't you expect your club to be in the top three, at least in the league, and maybe in the semi-finals of the Champions League? That is what you expect, or maybe in the quarterfinals, at least in the Champions League. I know, sorry, United. No pun intended. I know you're not in the Champions League, but you know what I mean. Europa League, chalo. So you would expect your club to be in the finals of the Europa League, being United, and you would expect Chelsea to be in the semi-finals or quarterfinals of the Champions League. That is an expectation. Or in the top three, at least challenging for the title. Transition season hai. But do you see Julian Timber to be a starting centre half in such a team? Nahin. Maybe a squad rotation role at best, being such a youngster. And that is why Louis van Gaal said the right thing. Louis van Gaal always says the right thing, most of the times. But in a wrong manner. That I agree. Impatient by Chelsea, lack of movement to sign him. नहीं यार, मेरे ख्याल से कर दिया था Chelsea ने offer. It's about his camp also. So I don't think Chelsea को बढ़ाना चाहिए. मतलब again, I will say that Chelsea should move on, man. Big deal, man. Come on, ऐसे भी यार मरीना दीदी जाने वाली है, looks like, तो टॉक्स तो ऐसे भी शुरू होने वाले वापस से. तो I don't think वहां पर कोई पॉइंट है ज्यादा करने का. 7 महीने हो गए भाई, ऑलमोस्ट 7 महीने. We are going to be entering July. We are talking to him from December, man. Too much. क्या बताऊं अंकित भैया, जब से वो टेक्निकल डायरेक्टर से स्पोर्टिंग डायरेक्टर बना, क्लब स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड्स. अरे इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ साइकिल, डोंट वरी अबाउट इट. इफ आई थिंक दिस इज गुड. What about Konrad Laimer? Konrad Laimer, by the way, talking about Bayern Munich, थोड़ा Bundesliga की बात कर लेते हैं. We spoke about Haller going to Dortmund. Konrad Laimer, actually, after जो madness की ना Bayern Munich ने, they are still targeting Konrad Laimer. Can you believe it? मतलब कितने जन चाहिए भाई Konrad Laimer? I don't know. This is like a bit too much. Sadio Mane is imminent. ठीक है. You had Ryan Gravenberch, you had Mazraoui, and now Konrad Laimer. I don't know. I think they probably need a striker. But kind of strange. But looks like Konrad Laimer to Bayern Munich is imminent, people. Do you think Champions League spot is at risk if your transfer market goes as Are bhai? I think Champions League spot definitely is a risk anyway.
अगर जाते भी है गेट द प्लेयर्स, बिकॉज से इट्स इजी टू गेट द प्लेयर्स, इट्स डिफिकल्ट टू परफॉर्म विद दैट न्यू टीम एज वेल. तो आई थिंक it all depends on how the season goes with respect to the team harmony, the the injuries and lot of other factors होते हैं. तो मुझे नहीं लगता only the transfer market will prove so much. At the same time, I don't know, it's old school. Maybe as a Chelsea fan who's kind of seen, the John Terry's and the likes, you never know. एक ब्रेक थ्रू सीजन होता है भाई. अगेन आई एम होपिंग अगेंस्ट होप, क्योंकि वही है, होप आपको जीवित रखती है और होप रखना चाहिए आपको. If you are a Chelsea fan, a Manchester United fan, a Barcelona fan, you should hope that maybe it is one of those breakthrough seasons for maybe Abologe in Manchester United, maybe Garnacho, just saying, or Hannibal. For Chelsea, Abologe, maybe for a Levi Colwill, maybe for a Dujon Sterling. And if Barcelona, then already you have a lot of youngsters coming through. So आप वो expect करोगे, because that can take you to the next level. ठीक है, तो there is always that chance. तो आई वुड नॉट से ट्रांसफर मार्केट में इतना डिपेंड होना चाहिए, बट शुरुआत तो वहां से होगी बिकॉज ऑफ द बिगर क्लब डूइंग मैडनेस, जो मेंटल कर रहे हैं ना सब लोग को. स्पेशली बायर्न म्यूनिख का मैंने जो नाम लिया भाई, इंटर मिलान, दे आर डूइंग अ मैडनेस. Man City, Liverpool have already done a madness. Think about it. These are like, bigger clubs on paper right now as things stand. I know Inter Milan नाम दिया उसी ब्रैकेट में बिकॉज अगेन एक साथ में इतने सारे ट्रांसफर रूमर्स आ रहे हैं, सब सच हो गए भाई, अलग ही लेवल हो जाएगी वो टीम. Neves this season out of 10 in your opinion? भाई Neves was good, but again I'm not, मुझे नहीं लगता यूनाइटेड फैंस शुड बी अनहैप्पी अबाउट हिम नॉट कमिंग टू यूनाइटेड, अगर नहीं होता है तो. बट आई थिंक ही इज अ प्लेयर जो he can play proper number 6 position, number 8 भी खेल सकता है. तो I think he's done a job for Wolves. Certainly I would rate him, I give him a 7 out of 10. इतना excellent season नहीं रहा है, but at the same time he's done a job. Conte in League is much more effective than cup competitions, exactly. And yes, people, come on, we are through 150 likes, thank you. लेकिन we should get to 100 and मैंने आज टारगेट डालना भूल गया. चलो ये टारगेट अपना आप देख लीजिए, सब लोग टारगेट टच करना है अपने को एटलीस्ट. Fun question, rank the following: Leva, Benzema, Suarez, Ibra. ये कौन सा एरा का बात कर रहे हो भाई मानव आप. लेकिन यार मेरा पर्सनल चॉइस में बोल रहा हूँ, अगेन माय चॉइस पीपल, बिफोर एनीवन कमेंट्स, पुट इन योर चॉइसेस आल्सो. मेरे लिए आई वुड हैव ऑन फॉर्म तो बेंजेमा नंबर 1. लेकिन अगर आप देखो प्राइम ऑफ द करियर देखो ना, हाउ दे हैव बीन ओवर द करियर, मतलब आई नो आर्ग्यूबली मैं बोलूं, आप लोग सब बोलोगे बेंजेमा वहां पे भी होना चाहिए, मे बी एंड इब्रा और सुआरेज कम्स, लेकिन आई वुड एक्चुअली टेक लेवेंडोव्स्की. लेवेंडोव्स्की हैज बीन फार मोर कंसिस्टेंट, बहुत ही अंडररेटेड. यू सी हिज करियर है भाई, लास्ट आई थिंक 7 or 8 सीजंस, आई नो बुंडेसलीगा बट व्हाटएवर, 7 or 8 सीजंस बैक टू बैक 40 plus goals every season. भाई साहब, लेवेंडोव्स्की हैज नॉट बीन स्पोकन अबाउट इन दैट लीग कंसिस्टेंटली, ही शुड बी. तो लेवेंडोव्स्की फॉर मी, देन कम्स एक्चुअली मैं वही ऑर्डर में डालूंगा मानव. हाँ, इब्राहिमोविच कैरेक्टर के लिए नंबर 1, लेकिन ओवरऑल एज अ स्ट्राइकर आई वुड रादर प्रेफर बेंजेमा और सुआरेज ओवर इब्राहिमोविच. सो सेम ऑर्डर. चेल्सी शुड ट्राई स्लॉटरबैक इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कुंडे. मतलब काफी ऑप्शंस है जब्बार भाई, वही मैं बोल रहा हूँ ना, काफी सारे ऑप्शंस है. व्हाई वी आर स्टक ऑन वन गाय, आई डोंट नो. 8744, थैंक यू, बिग अप टू 8744. Barca fan in the house, and do check out his channel please people. Axel Witsel to Atletico done by Matteo Moreto. Okay. हाँ चलो, ये लग रहा था. Again, Dortmund are not only getting in but also people out. Witsel kind of suits the way they play. और again, the fact कि वहाँ पर Carrasco भी है, another fellow Belgian, kind of helps also. Do you see Benfica, Dortmund, Ajax, Monaco holding onto the players and not being just feeder clubs in future? Probably inflow of cash needed. अच्छा, तो मानो मैंने काफी स्ट्रीम्स में बताया on my channel as well as on other channels that I'm very surprised that जो बड़े investors है ना, they're not investing in say Dortmund for example. I know Dortmund का fans kind of, it's kind of a fans club. You can say that it's about Bundesliga in general. लेकिन I'm very surprised that Dortmund is a club which could have taken off. So I'm really surprised कि वहाँ पर एक convincing deal नहीं हुई और they've not been sold, right? Absolutely. लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ और न्यूज में मिस कर रहा था. So again, coming back to the Chelsea story, people do check out beginning of the stream. मैंने react किया है about जो thumbnail में दिख रहा है आपको mainly. लेकिन in terms of any other news about Chelsea, देखते हैं और क्या न्यूज है भाई. तो बर्नार्डो सिल्वा, लेवेंडोव्स्की, हमने बात कर लिया. That seems like they'll probably stick out to their clubs, at least Bernardo Silva. लेवेंडोव्स्की अभी भी बार्सा लग रहा है ज्यादा.
Frankie de Jong, that's a better offer is going. Julian Timber to Man United is off, yes, as things stand, but the interest is not off. So ho sakta hai they might come back, just like they're coming back for Frankie de Jong bid. Dean Henderson out of Manchester United. Are you sure every Manchester United fan? आप बोलिए, what do you think about Dean Henderson to Forest? He's going on loan. Do you see Dean Henderson is getting the raw deal यहाँ पर, not getting a chance in Manchester United first team? Let's see. Lekin again, you cannot have everyone, right? Or De Gea is one of your leaders. So I kind of agree, but what do you think about Manchester United fans? Because Dean Henderson can play more with the ball. Koulibaly looks more to Barca. Barca now. Chelsea is not looking close, whereas Raphinha looks closer to Arsenal than Barcelona. Jesus as well लग रहा है Arsenal अभी. De Ligt to Chelsea, not this season, but maybe towards the end of the season, maybe they agree on a fee by then, looks like. Or maybe Chelsea going for Klaus, they're saving money for De Ligt, or they might just bid. अगर हमें Declan Rice नहीं मिलता, I know two different positions, but quite possible. ब्रेमर मुझे लग रहा है चेल्सी नहीं आने वाले, मुझे लग रहा है इंटर मिलान जाएंगे. दैट्स व्हाट इज लुकिंग मोर लाइकली. नेथन आकी टू चेल्सी, अगेन दैट्स अ स्टोरी. I don't buy the story, to be very honest about it, but I can see why Tuchel is interested. Again, go and check out my video on Almighty Sports Plus. मैंने डिटेल में बात की है उसके बारे में. Richarlison, now Chelsea fans आप बोलिए, this is really divided opinion. Richarlison is one of the favorites of Thomas Tuchel, surprisingly. उनको अच्छा लगता है Richarlison का aggressive attitude. I don't think I agree with that. Unfortunately, I don't. ये काफी baggage रखते हैं. I think he would expect to start every match almost. Richarlison can be a potential problem, but I can also see Richarlison kind of being that Armando Broja's upgrade जो हम रखे, और maybe Armando Broja doesn't want to stay. That is why Richarlison हो रहा है, because again Richarlison, like a Jesus, can play in multiple positions up front. So if Jesus goes to Arsenal, we might go for Richarlison अगर हमें नहीं मिलता है proper striker. हाँ, depends on Sterling भी, because Sterling can also play the false nine. So I think अभी भी domino effect का part है वो, लेकिन I would not like to see Richarlison. I don't know about you guys. Again, believe in Tuchel, definitely. Nothing against Tuchel, but I'm just putting my opinion. Lautaro Martinez to Arsenal की जगह लग रहा है मुझे अभी Manchester United ज्यादा. लेकिन I think Paul Pogba to Juventus, वो तो होने ही वाला है. It's a matter of time, if I'm not wrong. Origi to AC Milan, it's already done. Just medicals are remaining for people out there who do not know. लेकिन the interesting part would be that where actually I don't know man, मतलब इंटर मिलान की बात कर लेते हैं, तो डमफ्रीज कहाँ जाते हैं, मतलब राइट बैक जो साइन कर रहे हैं वो अभी इंटर मिलान यंगस्टर, ही इज नेक्स्ट एसी मिलान राइट बैक भी, तो इट बी इंटरेस्टिंग कि डमफ्रीज कहाँ जाते हैं. दैट विल बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे लिए. बट क्रिस्टियन एरिक्सन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड लुक्स लाइकली अगर फ्रैंकी डी जॉन्ग नहीं होता है. आर्सेनल फैंस आप बोलिए, व्हाट अबाउट फैबियो विएरा एंड मार्किनियोस, टू ब्रिलियंट साइनिंग्स फॉर द फ्यूचर डेफिनेटली. और स्पर्स आप बोलोगे यू आर गेटिंग द बेटर डील विद जेड स्पेंस ऑफ नॉटिंघम फॉरेस्ट टू द राइट विंग बैक. वाओ, तो यहाँ लग रहा है हमारे लंदन राइवल्स आर डेफिनेटली वर्किंग टुवर्ड्स द फ्यूचर. हम भी करने वाले, अभी तो एग्जिट्स हो रहे हैं हमारे क्लब, लेकिन हाँ, टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, द बेस्ट ट्रांसफर स्टोरी मुझे लग रहा है द ग्रेट प्लान, क्वाइट डूएबल. अगर वाइनाल्डम आते लिवरपूल, बेलिंगहम, दैट विल बी फॉर वन ईयर लोन, बेलिंगहम टू लिवरपूल नेक्स्ट सीजन, भाई साहब, मतलब that will be some domination. Where will Marcelo go, AC Milan or Marseille? I think Marseille looks more likely to me. That's just my gut feeling. Mario Götze to Frankfurt confirmed for 4 million. Yeah, मैंने already ले लिया है. Can Pogba be successful in Juventus? I think the environment is such that he will be successful. He knows a lot of stuff, the way they play and the pace of the game. I think he definitely pressure भी कम रहेगा compared to a Manchester United. So I see him being successful. But will he be doing week in week out? Yet again, no, it's not a press of a button. I don't think वो होगा unless वो खुद apply करते हैं अपने आप को. That is the real deal, right? Rio Valladolid to take both Marcelo and Dani Alves, Ronaldo Nazario. Oh yeah, that is a possibility, क्योंकि definitely उनकी club है वो, they escaped relegation, remember. Latest news is that, or rather they got promoted, one of them, right? Latest news that Chelsea and invested in Saza Kalajdzic. Kalajdzic, I think Stuttgart के striker, right, Gaurav? We were linked even last season, भाई. Very tall striker, but again, do I see him as a starter? No. So अगर आते भी तो I don't see it will change something. Can Portugal this? Okay, Portugal के लिए Neves, Renato Sanchez, Bruno Fernandes. भाई उससे याद है, what about Matheus Nunes? आधा पोर्चुगल तो वुल्स में है. Matheus Nunes to वुल्स होने वाला है, but I think
this seems a pretty good midfield. हाँ, Moutinho is towards the end anyway. Thank you, Tejas. Thank you, absolutely. And yes, it's just a start and need a lot of support going on future as well on both our channels. I'm afraid the Manchester United not sign any DM this season also. Arey, that will be a proper I don't know, मतलब आप गलती बोलोगे कि क्या बोलोगे, मतलब ऑलमोस्ट जानबूझ के, कम ऑन, डीएम तो साइन करना ही है भाई. हमें भी करना है, टू बी ऑनेस्ट. इज बाई जोन्स, हेंडरसन, मार्शल एंड एडब्ल्यूबी लीविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस सीजन? आई थिंक ये सब नाम में से हेंडरसन लोन पे जाने वाले टू फॉरेस्ट, नॉट टू न्यूकासल लुक्स लाइक. मार्शियल विल बी इंटरेस्टिंग, वो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम देंगे टेन हाल. बट हाँ, बाकी इट्स हाई टाइम दे लीव. बाई जोन्स, आई थिंक दे लीविंग डेफिनेटली. Thank you again, Tejas. Aguero to Aguero to West Ham. Okay, मैं बोला Aguero, बेचारा Aguero यार. I don't hope he gets well soon. Totally. लेकिन yes, I think ये डीहो से किया क्या, मतलब I think लीगा से किया ना एक अभिषेक. Correct me if I'm wrong, but certainly 30 million. What a steal with Chelsea would go for him. Rock solid for Rennes. Okay, Rennes से किया है. लेकिन the fact is West Ham में काफी लोग आते हैं from Liga, that's a fact. Remember Dimitri Payet, काफी लोग आते हैं, तो आई थिंक इट्स मोर लाइक एक कनेक्शन भी होता है ना क्लब का, तो वो भी हो सकता है. और मैं ऐसे आई एम नॉट लाइक काइंड ऑफ वरीड सो मच यार. पीपल वर आल्सो वरीड अबाउट बिसुमा टू स्पर्स. हाँ, दैट्स अ ग्रेट साइनिंग, बट am I like losing a world class player? Come on, that's not the true factor. हाँ, हो सकता है in the future, but at this point in time नहीं. So all the best to West Ham and all the best to the player, but a good signing, looks like a good signing. Chelsea not finishing top 4. अरे भाई लापुल का मेसी, thanks for coming, लेकिन no thanks for the comment, but I know what you mean. अभी के लिए यार ट्रांसफर विंडो शुरू हुआ है, 10 दिन हुए बस अभी. I guess Bayern will keep okay the second choice, and not forgetting they have the goat Choupo-Moting. हाँ, Choupo-Moting है, but again he's at best a super sub. यार, what will be the next striker Chelsea can sign after the legend myth Lukaku leaves? Richarlison लग रहा है from reports. Sterling, Richarlison. अरे नोटिफिकेशन नहीं आया है, काफी लोग बोल रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं है. आपने बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाया है ना? प्रीटी श्योर. अगर नहीं दबाया तो एक बार चेक कर लीजिए. ऑल नोटिफिकेशंस के लिए प्लीज हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन बोथ आवर चैनल्स. ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, यहाँ जो दिख रहा है नाम, ये नाम है, और ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एज ऑलवेज, लाइक आई से. बट थैंक्स हियर कमिंग. देयर इज अ स्मॉल चांस दैट वी एंड अप साइनिंग डेम्बेले एंड स्टर्लिंग. हाँ, अगेन दिशांक और सब लोग प्लीज गो चेक आउट माय वीडियो ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट प्लस. उसमें मैंने यही पॉइंट डिटेल में बताया है और ऑफ कोर्स डिस्कस भी किया है चैट से. अंकित भाई, डेविड राउंग या बोर्ना सोसा के लिए जाना चाहिए चेल्सी को अगर अलोंसो जाएगा? आई अग्री. अगर हम 4 एट द बैक जा रहे हैं, अगर हम 5 एट द बैक जा रहे हैं, आई नो दोनों अच्छे क्रॉसर्स है, बट आई वुड रादर वांट समवन हु इज अ गोल स्कोरिंग विंग बैक. हाँ, Chilwell is that आप बोलोगे, लेकिन Chilwell is coming back from long term injury, so we need a goal scoring wing back who can also defend. हाँ, बहुत ही difficult to find that combination, but मिलते हैं भाई ढूंढने पर. Toni Kroos not renewing contract with Real Madrid, okay, but Vinicius Junior has renewed, right, from what I remember. भाई मतलब he's told his agent कि भाई तू कोई और सुनना भी मत, कोई भी offer, just Real Madrid, that's a top club. Will Werner leave Chelsea? I have again predicted in the other video that Almighty Sports Plus. Werner or Ziyech में से one person is leaving Chelsea. I don't think Pulisic will leave. I think Werner or Ziyech में से one person will leave. But Werner was found where? LA Dodgers का मैच अटेंड करते हुए. So maybe वो मस्का लगा रहे हैं Todd Boehly को. Skriniar the probable sale we will be doing, and instead buy Bremer and Milinkovic. Not a bad deal in my opinion. Oh, interesting. Dishant, Inter Milan fan हाउस, बिग अप भाई. तो आपको लग रहा है मिलिंकोविच साविच इंटर मिलान जाएंगे? लेट्स सी. मतलब मिलिंकोविच साविच लिटरली हर एक विंडो में आता है यार इनका नाम, लेकिन ब्रेमर मुझे लग रहा है इमिनेंट. आई एग्री. कुड ही रिप्लेस स्क्रीनियर? नॉट इन शॉर्ट टर्म, इन लॉन्ग टर्म मे बी यस. Then Ankit bhai, we haven't seen you doing live streams with Baba much lately. Please have a stream together. अरे करेंगे भाई डेफिनेटली. एक्चुअली इनफैक्ट मैं आज ही सोच रहा था बाबा को पूछेंगे, बट इतना रैंडम था ना, और इतना मेरे अंदर ये था, क्या बोलते हैं, मतलब आग आ गया था इन टर्म्स ऑफ भाई एक साथ मरीना दीदी भी जा रही है, अपने ब्रूस बग भी जा रहे हैं, लुकाकू भाई साहब को पता ही है सब, तो और रूडिगर गए हैं, क्रिस्टियन गए, कोई नहीं रहा है. मैं बोला आज रिएक्ट करूंगा मैं, along with obviously lot of other news. तो डिस्कशन का आज मौका नहीं मिला, इसलिए मैं आज नहीं बोला. बट बाबा यार
all content creators, यार भाई ये सब. In fact, Baba, big up यार. Shout out to Baba for sure. In fact, हमें करना है. I'm planning to do a Chelsea show as well, weekly Chelsea show. तो आज ये my Chelsea show की category में डालूंगा मैं इसको. Definitely, we will be doing a lot of Chelsea stream, but not just Chelsea. Like, हम generally भी discuss करते हैं. Baba came on the Who Am I by the way recently. और talking about Who Am I, we are looking at a couple more episodes this week. So stay tuned. Hopefully कल होगा एक. अंकित भाई वीडियो एंड ऑडियो में लैग है. अरे इंटरेस्टिंग. प्रथम आप बोल रहे हो, बाकी लोग आपको भी लग रहा है कि लैग है. हो सकता है मैं काफी देर से बोल रहा हूँ. आई डोंट नो, मे बी दैट्स व्हाई. Gavi to sit on bench next season. Wow, that's a big call. Yeah, exactly. Baggage लाते हैं. But you should build a team in general for the future. You're building a team according to Tuchel, but what if he leaves or something? Good point. Very good point by Heya. That's why all eggs in one basket नहीं डालना चाहिए Chelsea को. We have done bad planning. जो मानव ने बोला था, I think, previously in the stream. Bhai, that will be good for Henderson because he will get game time and he can be in the World Cup 22 squad. But I think he's going on loan, and yeah, he's going on loan, exactly. Okay, Onana, Slani, Bellinova, Mkhitaryan are done deals with Inter. Dybala and Lukaku almost done. अरे भाई क्या ही तो बोलूं मैं. अब players going out. भाई दिशांत दे दो भाई, डम्फ्रीज दे दो हमें. टारगेटिंग बेलिंगहम. या रियल मैड्रिड और लिवरपूल का वापस से होने वाला एक लड़ाई, जस्ट लाइक चौमनी का हुआ. एंड पीपल कम ऑन, वी हैव नॉट गॉटन टू 200 लाइक्स. हाउ कैन इट बी? करीबन 2 घंटे तक हम बात कर रहे हैं एंड इतने सारे लोग भी थे, इतना सारा न्यूज, इतना सारा रिएक्शन आपको मिला, इतने सारे कमेंट्स मैंने लिए. कम ऑन, इतना तो बनता ही यार. एवरीवन हु इज वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब. Not only to Almighty Blues FC, but also Almighty Sports Plus. But please like the stream. That is something जो algorithm बोलता है कि हम लोग लाइव है और उससे ही लोग आएंगे. That's simple. एक thumbs up बटन दबाना है बस. मैंने कर दिया already. Thoughts, Hala Madrid, you are late, but please do check out the stream earlier part. Bowen to Liverpool ठंडा हो गया. I think the fact कि West Ham अभी they are kind of building as a club. मुझे नहीं लगता इतना easily देना चाहेंगे players, और they have a lot of money. Let's be honest. Premier League clubs को ऐसा कोई desperation नहीं है. COVID times touchwood has gotten better. तो with the rights, the TV rights etc. काफी आते हैं, और Bowen is a player who's entering his prime now. तो अभी तो काफी value बढ़ेगा उनका. I want United to sign a backup striker and central midfielder. Looking at the progress in transfer window, we might have to pray for wild card spot for UCL. अरे माने transfer deal, final deal. Okay, 32 million euros plus 9 million euros. Deal of the decade so far for me. Well, Bayern Munich in general, they do robbery, daylight robbery. Congrats to them. Will you ever in future cover ISL transfers also? I hope I do. ISL generally तो हम cover करते हैं. हाँ, not every match, लेकिन at least the bigger matches, होते हैं, और maybe towards the end we cover a lot. जो हम किए थे last season में, लेकिन hopefully if both the channel grows enough and I'm able to grow my team, I'll try and do a lot more content. Not just what we already do. लेकिन हाँ, already शुरू कर दिए मैक, it already. आप तो follow करते आ रहे हो काफी दिनों से. Whether Rudiger presented today and he was savage in interview to get Barcelona. Okay, क्या बोला यार बार्सिलोना के लिए, देखते हैं. Well, I think अगर ये हुआ ना आयुष, तो I think your season is kind of secure at least. हाँ, the fact is Martinez can play in 2 positions helps, तो definitely secure है. लेकिन at the same time, would you say that इतने सारे साथ में फिट होंगे साथ में? I think that's why आपके exits जो होंगे ना, वो भी काफी important. तो मैं बोलता हूँ this looks like a 8 out of 10 kind of a window अगर ये होता है ना जो आपने दिखाया. Milinkovic had been the centre back from Fiorentina. Oh, अच्छा, वही मैं सोचा. That is what I was thinking. Milinkovic, yeah, he's the centre back from Fiorentina. Thank you for correcting me. He was linked to Inter Milan. वही मैं सोचा Milinkovic savage Inter Milan जा रही है तो कुछ पागलपन हो जाएगा यार. Inter Milan इतने सारे top players ले लेंगे. But again, Milinkovic जो है centre back from Fiorentina, yes, you are linked. But again, can those 2 players kind of replace a Skriniar? I doubt it. थोड़ा सा. Aditya, Barca is coming back. Okay, yes. Nikola Milinkovic. Fair enough. Thank you, people. FIFA career mode stream incoming. Yes, that is definitely in the plans. But मैंने implement नहीं किया, but करूँगा definitely because I'm working on something else, a new series as well. So stay tuned for that along with Who Am I as well. There are United fans, Chelsea fans, City fans, Liverpool fans, even Spurs fans, but no Arsenal fans active in the chat. Actually, होते हैं. I do have a couple of Arsenal fans generally. पता नहीं आज
There might be busy or something, but होते हैं generally. But I hear you, Danish. Exactly why was stuck. Kunde Saga. Exact. इतने सारे भाई. Endika, yeah, very good shout. Endika का क्या season था भाई उनके लिए. ग्वार्डियोल खुद मना कर दिया उन्होंने, लेकिन इंडिका आई थिंक लेक्रोइड से हम आई थिंक जब टूकल नए नए आए थे ना, वी वर वेरी स्ट्रांगली लिंक्ड. Football creeks in the house. City are gonna use academy players a lot. That's why we're letting go players like Sterling, Jesus, Jinchen. Okay, interesting. हाँ, Bernardo is staying. वो तो I think he took a pun and indirectly बोल दिया उन्होंने. This is a different room, or you change the full setup before shooting for cricket videos. अरे ये ना basically आप guess करो, आखिर आप guess करो. Certainly, but हाँ, there's a lot of work which goes into it. इसलिए भाई सब लोग let's like the stream. Let's like the stream. Do subscribe, and again shout out to everyone in the chat, especially the super chats and members in particular, and even the mods. मैड्रिड को कितना मिडफील्डर चाहिए? आराम से बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना मैंने कवर कर दिया ऑलरेडी, so please do check it out. Okay, fair enough. Always being the old age home for everyone. Chelsea need Casemiro, profile player. Yeah, you hit the bang, nail on the head. Man City exists seem to be a lot this time. Well, exits होंगे but इतने सारे नहीं होंगे. I really feel इतने नहीं होंगे. और यार, come on, let's get to 200 likes. We are going to end the stream, or come on, just the press of a button. Let's get to 200 likes. ये तो minimum बनता ही है, नहीं? Don't you agree? Chelsea's new target is भाई और कोई exits नहीं हो, बस talk about exits. Entry हो जाए. We just need bodies, और pre-season के पहले भाई 2 signings कर लो, दो जो चल रहे हैं बात, जूल्स कुंडे और डेम्बेले आप कर लो भाई. इंटर मिलान नहीं दे रही किसी को तो बिग डील मैन. लुकाकू इज अ फ्रॉड अगर वो होता है, जो सच है, जो लग रहा है. तो एनीवे, हैविंग सेड दैट, इट इज व्हाट इट इज. कांग्रेट्स टू इंटर मिलान. नहीं, आई थिंक इंटर मिलान आर डूइंग गुड. वेल, रिप्लेस एक विंडो में नहीं होने वाला, टाइम लगने वाला है, तो वी हैव टू बी वेरी पेशेंट अबाउट इट. लेकिन आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि एक साथ शी एंड ब्रूस बक एंड रोमन अब्रामोविच साथ में, आई डोंट नो, ये नहीं होने वाला था, नहीं होना चाहिए था. केसीएम को रिप्लेस करना है तो 4-5 तो चाहिए ना. अरे ये ज्यादा हो गया है यार, लेकिन आई नो व्हाट यू मीन. चेल्सी बेस्ट नंबर 10 बिना हजार्ड. Question, what your favorite food dish? अरे basically I am a foodie. I love Indian food. I love basically Italian food as well. लेकिन I generally I'm more of a vegetarian person, तो definitely मुझे अच्छा लगता है, सीजनल फूड अच्छा लगता है. तो नाउ अभी समर चल रहा है, तो टॉक अबाउट एनीथिंग व्हिच हैज मैंगो. आई लव द मैंगो फ्लेवर, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर. बट यार, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन. और आपका भी बोल दीजिए, आपका क्या है? If I am Pep, I would ask for Ziyech to be part of the Sterling deal. Okay, interesting. I don't think so, because Ziyech, I know different है, फिर भी him and Mahrez in the same squad, I don't see it. I know आप बोलोगे कि Foden भी है, तो I think there are a lot of, हाँ, काफी दफा बोलते हैं लेफ्ट फुटर्स के लिए, we say that okay, how can you have so many left footers in the same kind of side of the pitch as backup as well. Right footers के लिए we are okay, but that's the reality of it. तो मुझे नहीं लगता वो होगा. Ziyech also, I think attitude थोड़ा सा मैं questionable definitely करूँगा Ziyech का. As much as I am a fan of Ziyech, people know it who follow me from long time. लेकिन again, मुझे नहीं लगता he can be anywhere close to Sterling in terms of the numbers. I think they are okay with Alvarez. I really feel that. Zinchenko to Chelsea would be a good fit. Would he be okay for again being that backup left back, being a DM जो core DM नहीं खेलता है? मतलब थोड़ा सा I disagree. Again, मतलब हाँ, maybe he can be a good fit in the long run अगर हम system change करें. लेकिन short term में अगर going by the system, current system, I don't see him as a good fit in the current system. That's the only problem. क्योंकि ज्यादा आपका जो लेफ्ट विंग बैक का हम ज्यादा यूज करते हैं ना. आई डोंट, हाँ, एज मच एज वो अटैकिंग स्किलफुल लेफ्ट बैक है, ही इज नॉट रियली लेफ्ट विंग बैक, यू नो व्हाट आई मीन. तो और प्लस उसका हाइट का थोड़ा इश्यू है इन टर्म्स ऑफ हिज जंप्स एक्सेट्रा. डिफेंसिवली देयर आर इश्यूज. आई वुड से देयर आर बेटर लेफ्ट बैक्स अवेलेबल एट लेफ्ट विंग बैक एज अ बैकअप इवन. आई लाइक जिनचेंको, or maybe he wants to play as a midfielder. But do we not have a lot of midfielders already? We need a midfielder कुछ change करने के लिए. वो चाहिए core DM. He's not like a hardcore DM, an out and out single pivot वाला DM. Okay, fair enough. Nice to know. Is Lukaku moving to Inter? Yes. और कब move हो रहा है? I hope अभी हो जाए भाई, अभी हो जाए, ताकि we can move forward. I didn't want Marina to go out so soon. वो भी हो सकता है for whatever reason.
हकीमी, अरे भाई साहब ये मैंने सुना था, इसलिए चेल्सी के साथ भी लिंक हुए थे, बट आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू भाई दिशांत, देखते हैं क्या होगा। एसपी यार टॉक्स अभी बाकी है, आई थिंक दे आर येट टू कन्विंस एसपी टू स्टे, लेट्स सी, आई एम होपिंग ही स्टेज, वी कांट लेट गो एवरीवन आउट ऑफ चेल्सी भाई। कोई नहीं मानव, आप मुझे डीएम करिए, मैं ये बात करते हैं अगेन, आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन, आई कैन ओनली सजेस्ट, लेकिन प्लीज डीएम मी, आप इंस्टा में हो शायद। अरे भाई यार डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ कि यार आप देखो, डिफेंसिवली जिनचेंको में देयर आर जस्ट अ स्लाइट इश्यू, यू नो देयर आर स्लाइट इश्यूज, इसलिए तो दे आर प्लानिंग टू रिप्लेस हिम विद अ बेटर बैकअप। अगर नहीं होता तो क्यों होता ना। हाँ, ही हैज अ लॉट ऑफ एट्रीब्यूट, आई एग्री, लेकिन डू चेल्सी नीड दोज एट्रीब्यूट्स आज के दिन में? नहीं, आई थिंक इन आर्सेनल मे बी दे नीड इट। ये देखो देखते हैं भाई, टाइम विल टेल। अभी यार आप बारसा प्लेयर्स इतने मत लो रहे चेल्सी से, बस इतना मैं बोलता हूँ, और अपने को जल्दी से आप फाइनल कर दो आपको जो भी चाहिए, ताकि हम कुलीबारी को ले लें कुंडे चाहिए तो ले लो, और द अदर वे राउंड। Yeah, man, totally fed up. And again, 50 people watching. Thanks a lot. 1 hour 55 minutes. Really means a lot that you guys have been here throughout, many of you. But I'm hoping everyone puts in your thoughts about Chelsea, not just Chelsea, but United, Arsenal, Barcelona, Man City, you know, Bayern Munich, Juventus, Inter Milan, हम सब क्लब्स के बारे में बात किए हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में. Of course, started off with Chelsea, but I'm hoping everyone has liked the stream or we get to this target of ये डायरेक्शन रॉन्ग हो सकती है 250 likes और 4.1k करा दो. Thanks for 4k, but also do check out Almighty Sports Plus. And yes, we are coming back with Who Am I, with World Cup series and a lot more transfers and something else as well. So stay tuned. We are always working, but do not forget भाई bell notification icon दबा दीजिए, like button दबा दीजिए, bell notification icon especially क्योंकि we have released a video on Almighty Sports Plus. Short videos वापस शुरू हो रहे हैं. So please it'll mean a lot अगर आप लोग वो देखो तो काफी मेहनत लगती है, but more than that short videos का idea ये है, we'll try and bring more timely videos you know वहाँ पर if you're not able to do a live stream. So hopefully you guys support on the short videos as well and you like them. नहीं भी अच्छा लगे तो please share feedback when you have the time on both the channels. Till next time, take care and Chelsea, come on, कुछ तो करिए भाई, and congratulations to all the clubs for making signings. Doesn't feel good, but the reality is that.